माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, birthday greetings. Honorable members, I am pleased to extend greetings to Honorable Members of Parliament, Shri K.C. Venugopal, Shrimati Kanta Kardam, Shri Neeraj Dangi, Shri Samir Uraon, whose birthdays were yesterday on 4th February, and also to Shrimati S. Phongnon Koinak on her birthday today. Sri K.C. Venugopal, whose birthday is on 4th February, he has been a member of this August House since June 2020 and serving his first term. Sri K.C. Venugopal had been a member of Kerala Legislative Assembly for 3 terms, 1996 to 2001, 2001 to 2006 and 2006 to 2009. Cabinet Minister in the government of Kerala for 1 term. He has served as member Lok Sabha for 2 terms and has been a Union Minister of State for 2 terms. Honorable member had also served as Deputy Chief in Lok Sabha. Sri K.C. Venugopal is a political and social worker by profession and is married to Dr. Asha K. and blessed with son Gokul and daughter Parvati. He has chosen the names very carefully, Gokul and Parvati. Srimati Kanta Kardam has been a member of this August House since April 2018 and serving her first term. She has played an important role in various social, cultural activities and several issues concerning awareness of human rights of downtrodden, deprived sections of the society and has been vocal for their upliftment and rights. Srimati Kanta Kardam is an agriculturist, social worker by profession and is married to Shri Veer Singh Kardam. She is blessed with 2 sons, Neeraj and Ashish, and daughters Upasana and Swati. Shri Neeraj Dangi has been a member of this August House since June 2020 and serving his first term. It is noteworthy that Honorable Shri Neeraj Dangi had made remarkable efforts in supporting the tsunami victims' families and post-tsunami relief work in Andaman and Nicobar Islands in February 2005, which was monitored by Ministry of Home Affairs, Government of India. He is a member of Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Honorable member is the son of late Shri Dinesh Dangi, a popular leader of Rajasthan, who had served as Minister in Government of Rajasthan. Shri Neeraj Dangi is an engineer, political and social worker by profession and is married to Dr. Preeti Soni. He is blessed with 1 son, Yuan, and daughter, Katyayani. I had the good fortune to be in the assembly along with his father. Shri Samir Uraon has been a member of this August House since May 2018 and serving his first term. He was a member of Legislative Assembly of Jharkhand for 1 term. As Minister of Committee of Welfare and Scheduled Castes and Scheduled Tribes as a member, he is enlightening the committee through his vast experience in the field of upliftment of SCs and STs. Shri Samir Uraon is an agriculturist and farmer by profession and is married to Shrimati Sushila Uraon. Shrimati S. Phongnon Koinak has been a member of this August House since April 2022 and serving a first term. Honorable members, I would like to share that through her untiring efforts, she has been instrumental in admitting a large number of children aged between 6 and 14 years who would drop out or never enrolled to school into formal schooling
in Mon Educational Block Resource Center, EBRC, and Aboi EBRC, which covers 37 villages. Her active role in the implementation of targeted intervention project at Aboi for injecting drug users, other vulnerable population, and being part of implementation of link workers scheme in Mon district for the prevention of HIV and AIDS is truly commendable. She also played an important role in initiation of the process of documenting Konyak cultural heritage. Srimati S. Fanganon Konyak is a social worker by profession. Honorable members, on your and my behalf, I wish them a long, healthy, and happy life and extend greetings to their family members. क्वेश्चन नंबर 21 श्री बजेंद्र सिंह जी। सर, प्रश्न संख्या 21। माननीय मंत्री महोदय। उत्तर सभा पर कर दिया गया। माननीय सदस्य। सर, मैं मंत्री जी का आभार जताता हूं कि उन्होंने बड़े विस्तार से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। उसमें उल्लेख किया गया कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन का समावेश कर समग्र शिक्षा अभियान की रचना की गई है। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि समग्र शिक्षा अभियान की इम्प्लीमेंटेशन के बाद से क्या लड़कियों की एनरोलमेंट में कोई बढ़ोतरी देखी गई है, खास तौर पे उन इलाकों में जहां फीमेल लिटरेसी का अभाव है। इसे बेहतर करने के भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कृपया इसका भी उल्लेख करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा को समग्रता एवं समावेशी रूप में कैसे रखा जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत कई सुधारों का प्रावधान भी है और इसके कार्यान्वयन में कई गतिविधियां भी शामिल है। और जिस तरह से माननीय सदस्य ने ये पूछा है लड़कियों के इनरोलमेंट के बारे में, तो मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि समग्र शिक्षा अभियान के बाद से 2014-15 से 2022-23 तक का अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा लड़कियों के इनरोलमेंट में भी वृद्धि हुई है और बच्चियां स्कूल में आए, वो बेहतर शिक्षा ले, इसके लिए कई ऐसे पहल हमारे माध्यम से शिक्षा विभाग के माध्यम से किए गए हैं। और उसमें लगभग हम देखें तो 9 वर्षों में अभी तक 1,20,000 से अधिक छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण किया गया है। अलग अलग तरह से जैसे जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, उसके माध्यम 14-15 से लेकर 22-23 तक अभी तक लगभग 336 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को 8वीं से 10वीं ग्रेड में अपग्रेड किया गया है और 1503 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को 8वीं से 12वीं तक अपग्रेड किया गया है। इसके साथ ही साथ बच्चियों को असुविधा ना हो, इसके लिए पास के स्कूल को अपग्रेड भी किया गया है। विद्यालय का निर्माण समग्र रूप से हो और उसके साथ ही साथ वित्तीय सहायता भी दी जाती है। जैसे बच्चियों को फ्री टेक्स्ट बुक दी जाती है 8वीं तक के छात्राओं को, उसके साथ ही साथ फ्री में यूनिफॉर्म दिया जाता है। इसके साथ दिव्यांग बच्चियों को 12वीं तक का उसे स्टाइपेंड दिया जाता है। बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बच्चियों को NMMS स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो इस तरह से समग्र शिक्षा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं और बहुत ही इनरोलमेंट भी बच्चियों का बढ़ रहा है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। जी सर। सर, मंत्री जी ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री को 2022 से शुरू किया गया, जिसमें देश के करीब 14,500 स्कूल चिन्हित किए गए हैं जिनके स्तर में बेहतरी की जाएगी। और इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि उसमें से 114 PM श्री स्कूल जो हैं वो हरियाणा से भी चिन्हित किए गए हैं। उत्तर में ये बताया गया कि
जो मेजर इंटरवेंशंस हैं पीएम श्री के माध्यम से, उसके 10 बिंदु दिए गए हैं। मैं सिर्फ आखिरी बिंदु को पढ़ना चाहूँगा, जिसमें लिखा है कि वोकेशनल इंटरवेंशंस एंड एनहांसिंग इंटर्नशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, especially with local industry, mapping of skills with developmental projects with nearby industry and develop courses and curriculum accordingly. मैं इस संदर्भ में आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिन वोकेशनल इंटरवेंशंस का और स्किल को डेवलप करने का प्रयास होगा और जो कोर्स और करिकुलम को भी उस प्रकार से विकसित किया जाएगा, उसके लिए क्या नए शिक्षकों की भर्ती इसमें की जाएगी या जो मौजूदा शिक्षक हमारी व्यवस्था में हैं उन्हीं को बेहतर ट्रेनिंग करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो ध्येय है पीएम श्री का, इसकी हम माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम श्री विद्यालय के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा है, बिल्कुल ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे ऐसे विद्यालय हों जो कि वो अग्रणी भूमिका में काम आए और वो निभाए, और उसी के तहत पीएम श्री विद्यालय की शुरुआत की गई। और पीएम श्री के कुछ पीएम श्री विद्यालय चयनित होने के 14,500 पीएम श्री विद्यालय चयनित होना है, तो जिसमें 6,000 से ज़्यादा भी चयनित हो चुके हैं और उसके कुछ मानदंड है, उसके अनुसार ये चयनित होते हैं, चैलेंज मेथड के तहत चयनित होते हैं। तो प्रदेशों के द्वारा जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं या फिर हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, वैसे विद्यालय उस श्रेणी में जो चैलेंज मेथड को पार करके आते हैं उसको हम चयनित करते हैं। और उसके साथ ही साथ चूँकि हम उसके लिए ग्रांट देते हैं कि अच्छी विद्यालय की अवसंरचना अच्छी हो, वहाँ पे शिक्षक आए और वो एक उस प्रखंड स्तर पर या फिर वो आसपास के विद्यालय में को भी बेहतर ढंग से वो गाइड कर सके। तो इसके लिए कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और इसके साथ ही हम उसमें ग्रांट भी दे रहे हैं। जो 6,000 से ज़्यादा विद्यालय चयनित हुए हैं उसको हम हेल्प भी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हरियाणा में भी ऐसे विद्यालय चयनित किए गए हैं और ऐसे भी शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन ये हमारी प्राथमिकता है कि शिक्षा को हम बेहतर करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस और नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ समग्र शिक्षा और पीएम श्री के माध्यम से ये हमारा प्रयास है कि हम अच्छे विद्यालय और अच्छी एजुकेशन, हम अच्छी शिक्षा बच्चों को दें। इसके तहत ये काम किए जा रहे हैं। और शिक्षकों को भी हम अलग अलग स्तर पर, जैसे शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा है, तो निष्ठा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम शिक्षकों को उसके आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग कराते हैं। इसके साथ ही साथ डाइट्स है, जो डाइट्स को जिला स्तर पर सुदृढ़ करने का निर्णय हमने लिया है। उसमें पिछले बजट में भी 100 से ज़्यादा डाइट्स को चिन्हित भी किया गया है, जो सेंटर फॉर एक्सेलेंस के रूप में हम उसे चिन्हित करेंगे और उसमें काम करेंगे, जिसमें एक करनाल भी है। और इसके साथ ही साथ आईटेप है, जो आईटेप 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी है जो लागू हो चुका है और उसमें शिक्षक किसी एक विषय में ही विशिष्टता हासिल करेंगे इस आईटेप के माध्यम से। तो अलग अलग माध्यम से ये हमारी सोच है, ये हमारा प्रयास है कि हम अच्छी शिक्षा बच्चों को दें। धन्यवाद। माननीय विष्णु प्रसाद जी। For giving me an opportunity to speak on the Ministry of Education. Primary education is paramount importance for all the students because the education, the primary level, is a fundamental for any child till their end. At this stage, I would like to mention that in Tiruvannamalai, there is a Kendriya Vidyalaya. I appreciate the government's efforts in including English and Hindi at all levels. We welcome it. But at the same time, the students are finding difficult because most of the teachers are Hindi-speaking teachers. But the students are finding difficult to understand at this primary level. So at least to certain point, some extent, if the teachers are from the local region, then the understanding capacity can be increased manifold from teachers to students. So will the government be kind enough to think in this issue and recruit the teachers from the regional level at all regions? Because our Honorable Prime Minister is very much proud of our Tamil language, and wherever he goes, he talks about Tirukkural. But unfortunately, in my state, especially in Tiruvannamalai, we find local teachers are not from Tamil Nadu
They are mostly from North India, and that is why students are finding difficult to understand the subject. Kindly consider, and will the government be kind enough to consider this request? Thank you. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो मातृभाषा पर जोर देती है, मातृभाषा भारतीय भाषा पर, और ये हमेशा से ये हम सब चाहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं, मातृभाषा के बारे में वो बताते भी हैं। तो ये हम जो देख रहे हैं एनईपी में भी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात हम कहते हैं, ताकि बच्चों को समझने में, सीखने में दिक्कत ना हो। और उसके तहत ऐसे शिक्षा की बात अगर हम करें तो शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है, तो जिसके तहत बहुत सारे जो राज्य के विद्यालय हैं वो अपने हिसाब से वो बच्चों को शिक्षा दे, वहाँ पे उपस्थित हैं, वो बच्चों को उनके भाषा में वो सिखाए। श्री मलुक नागर जी। जी अध्यक्ष जी, थैंक यू। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं। मैंने सदन में कई बार मुद्दा उठाया, और हमारा बिजनौर जहां से मैं एमपी हूं वहां 3 लोकसभा पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पे पहुंच जाती है, अधिकारी पे पहुंच जाती है, जमीन भी चिन्हित नहीं हुई, तो सेंट्रल स्कूल कब होगा? और एक दूसरा साहब कहना चाहता हूं, देश की सरकार बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, जो बाउंड्री है देश की, तो जो सीमा पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो मुसलमान गुजर हैं, वहां स्कूलों की बहुत कमी है। कि क्या बड़ा लड़कियों का कोई स्कूल वहां खोलने की सरकार की योजना है? अध्यक्ष महोदय, ये चूंकि केंद्रीय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है, और जहां तक बच्चियों के लिए है तो ऐसा कोई जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुले जाते हैं, तो जहां जहां जो बैकवर्ड इससे ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि राज्य की विशेष जवाबदेही राज्य की होती है समवर्ती सूची में आने के वजह से, तो राज्य सरकार इस पर विशेष रूप से हर एक सरकार अपने अपने स्तर से इनिशिएटिव लेती है, और नए तरीके से चाहे विद्यालय खोलना हो या विद्यालय को अपग्रेड करना हो, ये एक सतत प्रक्रिया के तहत वो काम करती है। श्री नामा नागेश्वर राव। थैंक यू स्पीकर साहब। तब विद्या जो है, जो बच्चा लोग विलेज लेवल पे जो रहता है, वो लोगों के लिए विद्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऑनरेबल मिनिस्टर ने विद्या के बारे में जो ये गवर्नमेंट जो लिया वो सब बता दिया, बहुत अच्छा बात है। मगर तेलंगाना का जो है ना, हम लोग नवोदय विद्यालय पूरा देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक नवोदय विद्यालय देता है। हमारे तेलंगाना के लिए 33 डिस्ट्रिक्ट था। बहुत दफा ये हाउस में हम लोग उठाया है, और एक डिस्ट्रिक्ट एक नवोदय विद्यालय देने का था, मगर टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ जो है ना 9 नवोदय विद्यालय दिया है। बाकी कब तक दे सकता है? कि बोलता दिस इज द ओनली स्टेट में जो है ना, एंटायर कंट्री में ये स्टेट में सिर्फ जो है नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट को एक नहीं दिया है। हम ये बात को मंत्री हम बहुत दफा जो है ना हम लोग पूछा है। अभी हम मंत्री जी से ना ये क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी एक जानकारी माननीय सदस्य को ये मैं देना चाहती हूँ कि ये नवोदय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है, और जिसके तहत कई उसके पैरामीटर्स है, और उसके तहत वो किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से फिर उससे संबंधित माननीय सदस्य लाएंगे प्रश्न, फिर इसके बारे में हम जवाब दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पीवी मिथुन रेड्डी। माननीय मंत्री जी। Sir, an answer is laid on the table of the House. श्री के राम मोहन नायडू। Sir, for the last 4 years, the state of Andhra Pradesh has been suffering extensively due to financial mismanagement, sir, which is being carried out by the present state government. It has not been able to pay the salaries of the employees. There is close to zero expenditure being spent on infrastructure like roads. There is mismanagement, diversion of funds which are being sent by the center to the state government, sir. Sir, in this, I want to mention to the Honorable Minister that when there is a financial crisis in the state, number one is the malintention of the state government itself.
Number two is when the state government is not able to maintain financial discipline, sir. What I mean by this is there are FRBM limits that are already there. But with the states, due to its own greed, it is borrowing much more than the limits. And when the limits come into the picture, when they are close to the FRBM limits, they are trying to use the state-owned corporations to raise much more money, sir, which is pushing the state into much more debt, but maybe it's not being shown under the FRBM limits. And one such example for the state of Andhra Pradesh, the present government, sir, it has promised that it is going to go, sir, I'll just finish, sir. It has promised that it's going to do liquor ban. And now it is so hypocritical that the AP State Beverages Corporation, which is going to sell liquor, and they are taking funds by issuing bonds through this corporation, sir, and increasing the borrowings of the state. I just want to know through the Honorable Minister, when the state is not following this financial discipline, what is the responsibility of the centre to ensure there is proper financial discipline in the state, sir? Thank you. So the Honourable Member referred to the FRBM Act, sir, which is essentially an act which, of course, in centre we do have, and every state has its own FRBM. So in other words, the FRBM for Andhra Pradesh would be something which the assembly there will be seized of the matter, and per their act, they should take the discussion forward in the House, if anything at all. One. Second, as regards the kind of nudging or suggestion or oversight that we can have is derived from the Article 293 of the Constitution, which periodically we keep doing. I just want to inform the Honourable Member through you, sir, that these are steps which we take. N.K. Premchandan. Sir, thank you very much for giving this opportunity to ask a supplementary on GST. So the GST compensation is a big controversial issue now in the country. Most of the states are complaining and also making a suggestion and memorandum to the Government of India to extend the GST compensation period so that the state will be financially empowered. See, I would like to know from the Honourable Minister, because it has already been the term of paying compensation, GST compensation has already been expired on 30th June 2022. So I would like to know from the Honourable Minister, if it is continuing, it is an anticipatory question I would like to know academically from the Honourable Minister, if it continues, that if the GST compensation payable to the states continues even after June 2022 at the present stage, how many states are eligible for getting GST compensation as per the statistical data available with the government? Because so many allegations are coming that the since the GST compensation is not being paid, the states are in big financial trouble, and the stress is because of the GST compensation is not being paid. So I would like to know from the Honourable Minister regarding this. And also, Madam may be remembering that the last session, the same question was put regarding the IGST also. The integrated GST also not being paid to the state because they have not submitted the proper records, and the Honourable Minister has directed me to discuss with the state government and let them supply all the documents regarding it. I hope that the state government has already mentioned all the documents have already been submitted, whether the payment has duly been given. Conclude. These are the two supplements. Thank you very much, sir. So the Honourable Member has raised quite a lot of issues in his questions, and if you allow me, I would like to answer each one of them. Sir, the GST law and the one specifically on the compensation, as the Honourable Member rightly pointed out, expired as of 30th June, meaning giving compensation to fill the gap between that assumed income and shortfall has come to an end as of 30th June 2022. The Council subsequently, because all of us underwent the COVID pandemic, when we didn't have revenues at all, we had to borrow money and keep giving the compensation. That borrowed money has to be serviced and to be returned. So, under the GST Act, which provided for the compensation, because it is the compensation which will have to be paid back to the states for the period which was covered by that act, and that had to be borrowed, and now the borrowing will have to be paid with the advice of the Attorney General of India,
the council took a decision to extend collecting compensation cess till such a time just that borrowed money and the interest that has to be paid to it are repaid. So 30th June 2022, paying of compensation per se has come to an end. The Act allows us to extend collecting the compensation cess for paying the compensation till 2026 March only on account of repaying the principal and servicing the interest for that amount for the borrowing that was done. And that borrowing was done purely for giving the compensation during that period ending 30 June 2022. So the compensation cess is getting collected now beyond 2022 only for that point and nothing else. And that technically will have to come to an end by 30th March 2026. Hopefully we'll be able to pay it back even earlier. Any extension of paying compensation beyond the amount which is being borrowed is not envisaged in the Act. And the GST Council has had several discussions on this. It is not envisaged in the Act to extend the compensation cess collection beyond 30th June 2022. That extension which I explained, which is going on till 26, is only as regards borrowed money which has to be paid back. That borrowing was purely for paying the compensation. So that is the true position, one. Second, compensation cess not being paid. I've explained this a lot of times. I'm seeking your indulgence so that I can explain it again. 30th June 2022 was the last date when we started collecting, when we kept collecting the cess, and with the cess collected, we are paying for the states. Paying for the states, the compensation happens every time the state produces with the AG's certificate saying this is the compensation due to us, please pay it. The moment that comes in with the AG's certificate, we pay it. Honorable Member N.K. Premchandran comes from Kerala. I would like to give him the factual position as of now. Kerala has, AG's certificate has been received from Kerala 4 years, except for 22-23 first quarter. 22-23 first quarter, Kerala has not sent the AG's certificate as yet. Any payment will be processed now that the AG's certificate has been received. And that is the principle on which compensation cess is being given to every state. Every other state has probably given, except for Nagaland, which has not given AG's certificate for any year beginning 2017-18. Sikkim has not given for 3 years, West Bengal has not given for 4 years, and so on. It varies, the position varies. So the moment the claim comes along with an AG certificate, we release the compensation amount. We are not holding back compensation amount for any other reason except if AG certificate has not reached us. अधीर रंजन जी, ऐसे तो डिटेल में जवाब दे दिया माननीय मंत्री जी ने. Madam, sir, the devolution of taxes, including GST, everything has been prescribed by our constitutions, and it is a constitutional mandate which is to be abided by you. But madam, don't take it otherwise. There is a general perception being grown across the nation that non-BJP ruled states are being deprived from having their legitimate due. The latest example is Karnataka, where the entire ministry has been agitating against the indiscriminate and arbitrary attitude of your administrations. They are alleging that they are being famished by sheer discrimination being played from your ministry. I would like to know whether state government of Karnataka has been deprived from obtaining their legitimate due, because few months ago the situation was not there. That time everything was going hunky-dory.
But after the new installation of government, because the non-BJP government has been assumed there, since then that trouble has been started on. What is the reason behind this kind of deprivation? Tamil Nadu also. Sir, devolution to the states. This is beyond, of course, this question, sir, but still, because it's an important question on which the leader of the opposition is asking a question, I would certainly respond. Devolution to the states happens in the direct tax matters as per the recommendation given by the Finance Commission. The GST, particularly the SGST, the state GST, goes 100% to the states. No one can do anything with it. It has automatic provision that 100% collected by the states will be with them. I repeat, 100% is with them. IGST is collected because it involves a lot of interstate payments. It is periodically reviewed also by the GST Council. It is because states should get the money in their hand, roughly, grossly, 50% is divided, and then periodically it is readjusted to actuals. So if a state were to get 41 and not 50, adjustment happens. If a state were to get 52, adjustment happens. So every now and then, when money gets accumulated under the IGST, it is divided grossly at 50-50 to all states and gets reconciled over the time according to the data that comes up. The CGST is divided as per the advice, 42% goes of the Finance Commission. So if this is direct tax, GST, sir, direct taxation is completely determined by the proportions decided and suggested and accepted and implemented by the central government. Now, of course, some states, and this rate fixation is nothing to do with the Government of India. Rate fixation as to how much should go to a state is done by the Finance Commission. And does the Finance Commission sit in one place and take a call on it? No. It goes all over, meets with every state government, talks to them, and only then submits the report. I want to humbly submit before you so that Adirji, please understand, I don't have the right to change as per my whims and fancies, that I like a state or this state is against my party politics and therefore, no way. I have no role. In fact, I would have to follow it 100%. And that's what I've done in my term here. And that's what every finance minister does in their term. Finance Commission giving recommendation, that which I have to implement, it is done without any kind of fear or favor or anything like that. So this apprehension that some states are being discriminated against is a politically vitiated narrative which, I'm sorry to say, vested interests are happy to go about saying it. There's just not a possibility that any finance minister can intervene to say, I don't like this state, stop the payment. No way. It cannot happen that way. The systems are well placed that the recommendations of the Finance Commission for every month's devolution will have to happen. But now that Adirji himself has said, politically you're doing this, I want to also say, and I want to. All right, let me answer your first question and also join you on your second additional point. Sir, Adhir Ranjanji saying in this first place only said 6 months, till 6 months it was all hunky-dory, now it's not. Can I, seeking your indulgence, say, till 6 months if it was hunky-dory, what's going wrong now? Have you started spending on items which you were not supposed to spend? I'm not even questioning that, do spend it, but don't put the blame on me. Don't put the blame on the center because it goes by the rule book, it has to give it, it will give it. If the expenditure are going into areas which cannot be sustained by your budget, I'm not answerable for that. So, Adirji, I'm sorry, till 6 months ago,
Which government was there? It's not my role now to talk. Hunky-dory it was. No, it's not. Introspect, please. You're saying that. I didn't say that. You're saying that. Sir, therefore, Adirji, I respect him. I give him detailed answer. But if there is an insinuation that it's because me holding money here, I'm sorry. When the Finance Commission comes, please tell your needs. Please tell your requirements. Please tell your status. And let the Finance Commission fix it. It's a constitutional body. Sir? Okay. Finance Commission is now... Oh, 1 minute. Please. Oh, surely. I'll certainly sit with the Karnataka Minister, Deputy Chief Minister, Honorable D.K. Shukmarji came and met me. He told me about the difficulties. I've heard him. I've given him the matter-of-fact answer. It's not as if I don't want to meet state authorities, state ministers. I can't do as long as the Finance Commission doesn't tell me to do. Constitutionally, unless the Finance Commission tells me to do something, I cannot. I don't have the discretion. Adirji, please don't imagine that I have a discretion to play around with Finance Commission's recommendations. Please talk to the Finance Commission. I'm not talking about generosity. Sir, I'm talking about Finance Commission's recommendation, which I follow to the last word. I'm not talking about anybody's generosity. So, let us please talk on the terms. Finance Commission gives me a recommendation, I follow it. Now suddenly Adirji says, meet up the state. I've met up the state. I'm not doing anything is the next allegation. I can't do anything is my answer. No, why don't you meet them? I've met them. But you're not doing anything. I can't. Question number 23. Question number 23 से उमेश जादव जी. Question number 23, sir. माननीय सदस्य. Sir, I have received the reply. Reply में ये कहा गया कि Ministry of Tribal Affairs has not received proposal for inclusion of specifically Gond Kurba community in ST list of Karnataka. Sir, my question was probably not understood properly, or I would have not asked properly. Sir, Karnataka government has recommended, sir, in Karnataka, Gulbarga, Yadgir and Bidar, Kurba is Gonda, Gonda is Kurba. These are synonymous terminology. Karnataka government has recommended 4 times for the inclusion of these community in ST. So I am giving the references. The government of Karnataka has sent the cabinet approved note to the central government on 25/12/1996 and 10/2/1997 with regard to the district of Bidar undivided Gulbarga for the considering the tribes by the name Kurba has synonymous of Gonda scheduled tribe for these districts. In this regard, the Ministry of Tribal Affairs, Government of India, wide its letter dated 21/4/1997 requested Government of Karnataka, Department of Social Welfare to send the ethnographic report on Gonda Kurba of these districts. The Tribal Research Institute of Government of Karnataka conducted an ethnographical survey study on Gonda Kurba and submitted its report to the Government of Karnataka. The report approved in the state cabinet on 3/3/2014 and recommended to the central government on the 4/3/2012 for consideration. Again, the Secretary of Government Social Welfare Bengaluru also submitted TRI communities views on the report of the Karnataka Ministry of Tribal Affairs, Government of India on 5/9/2014, 12/5/2017, 18/5/2018, 31/5/2020 for further necessary action. However, ORGI, without getting into merits of the ethnographic report and considering the irrelevant literature, has raised queries with the Ministry of Tribal Affairs. Same has been taken up with the Government of Karnataka. Government of Karnataka has addressed all the queries and recommended again for consideration. ORGI again asked additional information from
ethnographers, comments of ORGI and justification of ethnography report to include the term Kurba has synonymous Gonda Chal tribe in Bidar, Kalburgi and Honorable Yadgir member, district, Karnataka please. submitted, sir. Sir, this is very burning and serious issue, sir. Recently, 2 days back, एक हमारे गुलबर्ग के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो साइकिल टायर ट्यूब पंक्चर करता है, उसकी बेटी मेरिट में आकर शी वॉज एम्प्लॉयड, उनका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया सर, उसको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और वो ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक. Day to day these things are happening, sir. I sincerely request Gonda and Kurba are same in only 3 districts. Population भी ज़्यादा नहीं है हमारे पास सर, बहुत कम population है. कलबुर्गी, बीदर एंड यादगिर में कुरबा गोंडा कुरबा इनको धनगर भी बोला जाता है सर. इनको कंसिडर करने के लिए मैं सिंसियरली आपके जरिए मैं हमारे अर्जुन मुंडा जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. और हम बहुत बार डेलीगेशन गए सर, एक बार नहीं कम से कम 50 बार उनके पास गए सर. हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं सर, माननीय मंत्री जी, बहुत गरीब पिछड़े हुए लोग हैं, इनके लिए मदद करना है सर. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार उनको उत्तर दिया गया है. उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें उन्होंने कहा है कि गोंड कुरबा से संबंधित प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव कुरबा से संबंधित है और 2 प्रस्ताव है. उसमें एक है कुरबा समुदाय को जिसका क्षेत्र विस्तार करने के संबंध में, और दूसरा है कि कुरबा को गोंड के पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिमस वर्ड के रूप में सम्मिलित कर. इस मामले में जो पत्राचार हुए हैं उसके बारे में माननीय सदस्य ने खुद बताया है, क्योंकि इसके एक मोडालिटीज़ है, एक पूरे किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूलिंग करने के लिए जो भारत सरकार ने मानक तय किया है, उन मानकों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार के रिपोर्ट आने के बाद में जांच होती है. और जिस स्तर पर ऐसे विषय आते हैं जिसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो उस स्तर से पुनः मंत्रालय के माध्यम से वहाँ भेजी जाती है. तो ये जिस वर्ग के बारे में कह रहे हैं, इनके बारे में पहले आरजीआई ने जो रिपोर्ट दिया है वो खुद मंत्री माननीय सदस्य इससे अवगत है. और अभी ये कुछ स्तरों पर विचाराधीन है जिसकी सूचना अभी तक मंत्रालय को नहीं मिला है. आगे जब मिलेगा तो उसका सूचना हम माननीय सदस्य को अवश्य उपलब्ध करा देंगे. सर और एक सर, हमारे पास कोली कब्बली के बारे में भी हमने बहुत बार ये मैटर रेज किया है सर. माय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू ऑनरेबल इज इन कर्नाटक कोली कब्बलिगा and its synonyms are recommended by the state government for Karnataka for inclusion in ST list of Karnataka. Currently it is in RGI for evaluation. Sir, currently some communities like Tokre Koli, Dhor Koli, Koya Kolcha, Kolga, Raj Koya, Bin Koya are included in the ST list of Karnataka. But the remaining leftover from the Tokre Koli, Koya, Dhor Koli, that is Koli and Kabbaliga, are necessary to include in the list of ST at the earliest. It is my once again sincere request. Minister should sympathetically consider and take decision early, sir. Thank you. अध्यक्ष महोदय, कई राज्यों के ऐसे बहुत सारे मामले मंत्रालय के विचाराधीन और उससे संबंधित विभिन्न स्तरों पर सारे लोगों के कमेंट्स के लिए आते हैं. उसमें जो कहा है वो अंडर प्रोसेस विभिन्न स्तरों पर है. कर्नाटका के मामला में गंगा माथा का है, हनुमत्था का है, जैसे कोली का उन्होंने कहा, उसी तरीके से कंडुवड़ियान का है, मलयाली का है, कई ऐसे समूहों का है जो विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है. ये ऐसे मामले हैं जिस मामले को जो प्रावधान है उसके अनुसार देखे बिना नहीं किया जा सकता है. इसलिए
इसकी औपचारिकता के जो मापदंड है उसके बारे में लगातार चर्चा हुई है और 2000 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके अनुसार इसको देखना बहुत आवश्यक है। श्री फ्रांसिसो सर्दिना। There are 3 communities in Goa, Velip, Gowda and Kundi, which are included in scheduled tribe. There is a permanent request from government of Goa to include Dangar community, which is much more backward than these 3 communities who are included in the list. So please, I would request the government and the minister to please consider this and include this Dangar community in the scheduled tribe list. प्रश्न से संबंधित इसलिए नहीं है कि कम्युनिटी के कई राज्यों से संबंधित है, लेकिन इसके अद्यतन स्थिति से माननीय सदस्य को मैं अवगत करा दूं। श्रीमती सुप्रिया सुले। जिस राज्य से मैं आती हूँ महाराष्ट्र में मराठा, धनगर और लिंगायत और मुस्लिम समाज का आरक्षण की आंदोलन सब जगह चल रहे हैं और धनगर समाज का आरक्षण को प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने भेजा था। पिछली बार भी सर मंत्री जी ने उसके बारे में भी जवाब दिया था और उनके पहले दूसरे जवाब में उन्होंने ऐसे कहा कि बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं राज्य से लेकिन उस पर कमीशन लगता है, तो कुछ टाइम बाउंड मैनर या कुछ जवाब हाँ या ना में मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज को मिलेगा, हाँ या ना? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि ये चारों वो देना चाहती है, तब वो दिल्ली कागज आए कि नहीं और निर्णय कब होगा? थैंक यू सर। जहाँ तक धनगर समाज के विषय में है, क्योंकि माननीय सदस्य को इस बात से बहुत अधिक वो स्वयं अवगत है कि इन मामले में राज्य ने एक बार बहुत पहले प्रस्ताव भेजा था, उसके बाद प्रस्ताव वापस ले लिया। अब प्रस्ताव जब राज्य सरकार के पास है तो केंद्र के पास विषय विचार के लिए कैसे हो सकता है? तो क्योंकि यह राज्यों की सूची बनती है और राज्य के अनुशंसा के आलोक में बाकी कार्रवाई प्रारंभ होती है। श्री निशिकांत दुबे जी। बात सभापति महोदय 2014 में एक कमेटी बनी, ऋषिकेश पांडा कमेटी, और उसने सारे लोग जो आरजीआई, राज्य सरकार, SC/ST कमीशन, उन सबों के मेंबर उसके सदस्य थे और उसने एक रिकमेंडेशन किया कि कई एक ऐसी जातियां हैं जो कि ट्राइबल थीं और किसी कारणवश भूलवश जो है वो छूट गई। उसमें से 2 जाति हमारे यहाँ है झारखंड में, खेतौड़ी और घटवाल। जब माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उन्होंने खुद ही 2 बार इस प्रपोजल को भेजा है। संयोग बढ़िया है कि ऋषिकेश पांडा कमेटी की भी रिपोर्ट मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई। ये खुद मंत्री हैं। क्या वो दोनों जातियां जो किसी भूलवश छूट गई, और ऋषिकेश पांडा कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उसमें बिना किसी नियम कानून के उस कमेटी के आधार पर आप उसको ST का स्टेटस दे दीजिए, उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि उसका जवाब यही आएगा कि राज्य सरकार ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पांडा कमेटी के आलोक में क्या उसको ST का स्टेटस हम दे सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि जो राज्य सरकार के एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर आई गई रिपोर्ट पर जनजातीय मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर, क्योंकि सबसे पहले आरजीआई के बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और उसके बाद कई मंत्रालयों से विचार विमर्श करते हुए मंत्री परिषद में लेकर के आती है। यह एक विधि निर्धारित की गई है, प्रावधान किया गया है। अब पंडा कमेटी एक गठित हुई थी, जिस पंडा कमेटी के माध्यम से ये बताया गया, जिस तरीके से लोकुर कमेटी 1962 में बनी थी, उसी तरीके से एक पंडा कमेटी बनी थी जिन्होंने कुछ चीज़ों को सामने लेकर के आया था। लेकिन
जब इस पर विचार हुआ तो यह हुआ कि जो हमारी विधि निर्धारित की गई है, जो गाइडलाइंस बनाई गई, उस गाइडलाइंस के आधार पर ही, अन्यथा कई कमेटी इस तरह की बनेगी और उस कमेटी के माध्यम से शेड्यूलिंग का, क्योंकि आर्टिकल 342 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसके मापदंड को इस तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि वो किसी कमीशन के माध्यम से आए रिपोर्ट के माध्यम से शेड्यूलिंग का कार्य करे, बल्कि इसके जो विभिन्न स्टेजेस है उसके आधार पर ही इसको लाना चाहिए। तो उसको पूरा करने के लिए फिर राज्यों को भेजा गया। जहाँ तक घटवार और खेतौरी की बात है, घटवार और खेतौरी का इसके पहले कई स्मारित किया गया है और लगातार पूछा गया है, लेकिन राज्य के तरफ से अभी तक इस मामले पे कोई उत्तर मंत्रालय को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, श्री के सुब्बा नारायण। नंबर 24, माननीय मंत्री जी। ऑनरेबल मेंबर, I have two supplementary questions, sir. One is whether there any borrowing limit fixed to the state and center. If so, the details thereof. Another one is whether any state government requested for allowing them to borrow beyond the limit in cases emergency. If so, the details, sir. उधारी का संबंध है। सभी राज्य सरकारें अपना FRBM एक्ट बनाती हैं और उसके तहत उधारी लेने का काम वो करती हैं और भारत सरकार से उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। केवल भारत सरकार इतना ध्यान रखती है कि जो FRBM का एक्ट है उसके ज़्यादा अगर लेता है तो भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि किसी प्रदेश ने मांग किया है, प्रदेश मांग करती रहती है, लेकिन जो भारत सरकार FRBM एक्ट है उसके तहत भारत सरकार प्रदेशों को अनुमति देती रहती है। डॉक्टर शौकत राय। Sir, the minister has given a detailed reply, but the fact is that due to high level of debt of the government, the industry, the investment came down. It was as high as 38-39% of the GDP. It came down to 32% of GDP in 22-23. The reply states that overall investment rate in economy consolidated at 29.2% in 22-23 and has improved to 29.8%. So obviously the minister in the reply has stated that this was due to one, pandemic and low revenue collection, and two, the NPAs in the bank which the government is trying to set right. May I ask from the Honourable Minister as to when, in the government's estimate, investment rate will go up to 39% as it happened to 2011-12, and what are the further steps being taken by the government in this regard? Investment rate is very low and all the government's tall talk has not resulted in investment going up. माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक निवेश का सवाल है उसका विस्तार से उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है, लेकिन अगर देखें जो हमने उत्तर में भी बताया है कि इधर जो भारत सरकार ने तमाम सुधार किए हैं, चाहे वो IBC कोड का हम लोगों ने लाया, चाहे GST को लेकर के आए,
और भारी मात्रा में जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, उसको अगर देखें तो लगातार निवेश में कोविड के बाद में जो कोविड के समय जो घटोतरी हुई थी, आज निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और निश्चित तौर से जो 2011 का लक्ष्य है बहुत जल्दी हम प्राप्त कर लेंगे। श्री ए आरिफ। Thank you, Speaker, sir. Honorable Finance Minister, stating in her reply about the CapEx loan, which is the industry loan for 50 years, I would like to know, in this regard, will include this loan allowing is borrowing limit of the states prescribed by the Finance Commission or FRBM Act. I request you to exempt the CapEx loan from the borrowing limits of the state. Honorable Finance Minister is well know about the financial constraints of the states after the GST Act. I have a simple and important doubt about regarding the GST Act. Honorable Finance Minister is replying. We cannot amend the GST Act. If you have any interest to support the states, you can amend the GST Act. Come before the amendments. We will support you. So I request to Honorable Finance Minister consider the request to exempt the borrowing limit of the state from for the capex loan. माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक जीएसटी के में संशोधन करने का सवाल है, जीएसटी की अपनी एक संवैधानिक व्यवस्था काउंसिल है, उसका निर्णय कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल ही लेती है। जहाँ तक कैपेक्स बढ़ाने का सवाल है, अगर देखें कि भारत सरकार ने कोविड के समय भी जब हमारा सेस कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, टैक्स कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, उस समय भी भारत सरकार ने बैक टू बैक लोन लेकर सरकारों की मदद करने का कार्य किया है। और अगर आप देखें तो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार का अपना कोई क्षेत्र नहीं है। उन सारी योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं सभी प्रदेशों में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 श्रीमती पूनम महाजन। पटल पर दिया गया है। राम शिरोमणि वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती जो कि साक्षरता दर के मामले में देश में తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా మన ఓర్గలో 9 న్యూస్ ఛానల్ కి జిల్లా స్థాయి నియోజకవర్గంలో అనుభవం కలిగిన జర్నలిస్టు కావాలను 9494825960 నెంబర్కి సంప్రదించండి। सबसे पिछड़े जिलों में आता है। यहाँ सामान्य और उच्च शिक्षा के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार ने देश के पिछड़े और आकांक्षी जिलों में उच्च शिक्षा में सुधार और उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की कोई योजना बनाई है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दौरान सारे देश में सभी स्तर के शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जब उच्च शिक्षा क्षेत्रों के बात हम कहेंगे तो इसमें पीएम ऊषा जो पहले हम रूषा नाम से चलते, रूषा 1, रूषा 2, अभी 2023 जून में पीएम ऊषा हमने लॉन्च किया और इसमें सभी राज्यों ने मूव किया, लेकिन 5 राज्यों जो है बिहार, दिल्ली, ओडिशा, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्यों इससे नहीं जुड़ा है। उनको क्या मालूम नहीं शिक्षा की जरूरत है क्या नहीं। तो इसमें जो फोकस है
फोकस है जो एनबी को द्वारा, और फोकस डिस्ट्रिक्ट भी है। फोकस डिस्ट्रिक्ट वो हमारे जो स्टेट्स वही चयन करते हैं, और इसके साथ साथ जब सारे एक्सेस, इक्विटी और जो उसको एक्सेलेंस, उसको बारे में भी आगे चले, इसके बारे में चर्चा करके स्टेट के द्वारा प्रपोजल भेजते हैं। और जैसे फ्लेक्सिबिलिटी पूरा स्टेट ही रहेगा, रैशनलाइज्ड स्टेट भी कर सकता है यूनिट ऑफ कॉस्ट, और इसके साथ साथ कोई हार्ड कंपोनेंट और सॉफ्ट कंपोनेंट के बारे में अलग से कुछ नहीं किया, हम सारे इसके लिए कर रहे हैं। श्री संजय सेठ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानकारी चाहते हैं कि पीएम रूसा स्कीम में हमारे राज्य झारखंड में उस कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं, और हमारे रांची में खिलाड़ी में कोई सेंट्रल स्कूल खोलने की कोई व्यवस्था है क्या, और रांची जिले में कोई केंद्रीय विद्यालय और खोलने की जानकारी है क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे हैं। तो हमारे वहाँ झारखंड में पीएम रूसा में भी जो अच्छे काम भी हुआ था, उसमें 2018-19 में 27 प्रोजेक्ट हुआ, 27 यूनिट, 27 यूनिट्स, और 2019-20 में 9 प्रोजेक्ट्स हुआ। और इसके साथ साथ जो पीएम उषा नया चयनित हुआ, पीएम उषा 2023 जून में लॉन्च हुआ, इसमें भी झारखंड में 12 डिस्ट्रिक्ट चयनित हुआ। ये 12 डिस्ट्रिक्ट में है चातरा, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खुंती, लातेहार, पालामऊ, साहेबगंज, सिमदेगा और वेस्ट सिंहभूम। ये सारे जगह में हमारे जितने सारे व्यवस्था है, जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च ऑन यूनिवर्सिटीज, ग्रांट्स टू स्ट्रेंथन यूनिवर्सिटीज, ग्रांट्स टू स्ट्रेंथन कॉलेजेस, न्यू मॉडल कॉलेजेस एंड जेंडर इंक्लूशन के लिए भी जो एक भी हम करते हैं। और इसके साथ साथ जो गिरिडीह में जो हुआ, इसमें गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल, उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय एक भी हुआ, केंद्रीय विद्यालय भी एक है, और मद्रासा रिकॉग्नाइज्ड, मद्रासा अनरिकॉग्नाइज्ड भी है 13, और इसके साथ साथ जो 95 प्राइवेट अनएडेड स्कूल वो भी हुआ। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 16, ऑनरेबल श्री आर गिरिराजन प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी। थैंक यू सर। Laid on the table of the House. Thank you. First supplementary. Please be brief in your question. Sir, in his answer, the Honorable Minister has said the price of CNG at Delhi has increased by just 1.30%. Sir, in 2021, the price of CNG was increased 4 times. Please question Mr. R. Rajan. Yes. That's why I'm asking, on February 8, 2021, the price of CNG was increased from 49.90 to 49.40 per kg. The highest CNG price was recorded in Mr. R. Rajan, please question. Raised in 115. Sir, my question, CNG is considered to be an eco-friendly and cost-effective fuel compared to diesel and petrol. The very purpose of encouraging the use of CNG is to reduce pollution and is much cheaper than diesel. Mr. R. Rajan, your question has not come till now. My question is whether the government has taken steps to bring back the prices of CNG to rupees 50 per kg and would like to know the total compressed CNG. Thank you. Please be brief in your question. माननीय मंत्री जी जवाब भी briefly ही देंगे.
Sir, I'm entirely in agreement with the honorable member that the government should encourage more consumption of compressed natural gas because it's relatively a cleaner fuel. Although there is a debate in the West whether even that's an entirely green fuel or not, but I won't get into that. It is for that reason, sir, the government has ensured. The reference period in the question was the last 18 months. And the government has ensured that whilst global prices were witnessing turbulence, massive increases, shortfall, honorable member just now in his supplementary referred to an earlier period than 18 months. There was a period when there was a lockdown, and lockdown prices don't reflect reality prices. For instance, during the lockdown, the crude price came down to $19.56 a barrel, and then it shot up to 128 and 130. Sir, we were able to do this for two reasons. We rationalized our system of calculating cost in April 23, and as a result of which, whilst the global prices were $53.51, the Japan-Korea, I'm citing Japan-Korea because those are two large consuming markets, and China is also part of that. One market to the east of India, Japan, Korea, China. The other is the Western India market, which is west of India towards the Middle East. Both those prices were very high, $53.51 per million metric British thermal units, and the domestic gas price was much lower. It was 83% lower. The average price also was 69% lower. Yes, it is our constant effort to provide more gas available for domestic cooking purposes and, sir, for the transport sector, and we are committed to make the green transition. In fact, our trilemma is to ensure availability, affordability, and sustainability. And the increased gas which is being provided, we raise the gas available to the CGD sector and transportation sector by 2.5 times, 250%, sir. So I'm in agreement. We are making that, and we are ensuring that Indian gas prices are way below the market prices, global market prices. Thank you. Second supplementary. Please be brief. Sir, my second supplementary question. I would like to know from the Honourable Minister whether the government has initiated any drive for increasing the use of CNG vehicles in the country and to provide any incentive, concession, subsidy to encourage people to switch over to CNG vehicles from diesel. The total number of CNG vehicles in the country as of now, the number of CNG vehicles are expected to hit the road before 2030. Thank you, sir. Sir, there is an autonomous process of transition taking place. If you look at the number of CNG vehicles, at the time when international CNG prices went up, there was an apprehension that people would stop buying CNG vehicles. That didn't happen. And the very fact that we can make gas available, natural gas available for the transportation sector at reasonable prices, not linked to market global prices, that itself acts as an incentive. The same is happening also with electric vehicles, but the issue of giving incentives, I think the most important incentive you can give is to make the energy which these vehicles consume available in plenty, and we are taking our overall use of gas in our energy matrix from 6% to 15%. So we are going down that, giving specific incentives, etc. Those are the subjects, I think, of other ministries. But I'm sure the honourable member is aware that that does not pertain to my ministry. Thank you. Dr. Sikandar Kumar. Dr. Sikandar Kumar. Thank you, sir. With your permission, I would like to know from the Honourable Minister of Petroleum and Natural Gas that is there any mechanism to decide the CNG prices? If yes, then what is that and how the CNG prices are determined? And secondly, what initiative the government has taken from time to time in order to stabilize the CNG prices? एक ही सवाल पूछना था आप, please, माननीय मंत्री. Sir, I'm quite happy to answer both because they are interlinked. Sir, the position prior to April 23 was that Indian gas prices were based on 4 hubs, namely US Henry Hub,
Canadian Alberta hub, UK NBP and Russian gas market. And the prices used to be fixed over a 1-year reference period every 6 months. Now the difficulty with that was that these were not aligned to the Indian condition. And out of these 4 hubs, 2 of them, sir, the UK NBP and the Russian gas market, stopped operating after the one after the Ukraine-Russia war, and the other one because of the North Sea oil difficulties. So we took some very far-reaching decisions, reforms. In the month of April 23, we decided to delink the Indian gas price from these 4 hubs, and we aligned them to the Indian crude basket. In other words, 10% of the Indian crude basket. And as a result of which, we were able also to fix the prices every month, and the price of oil now has a price of gas has now a floor and a ceiling. The floor is $4 MMBTU, and the ceiling is $6.5 MMBTU. This immediately resulted in the price in the month of March coming down from March price, the April price, because we took these decisions in April, coming down drastically. Sir, we are doing many other things. For instance, the number of CNG stations has increased from 738 in 2014 to 6,159, which is a growth of 735%, sir. Sir, the area covered by CGD, which is the domestic gas availability, that has gone up, sir, from 5.47% of the national Indian national territory to 88%, and this is an increase of 1,508%, sir. The population covered by CGD in 2014 was only 12.81%. It is now 98%, and this is a growth of 665%. So whichever way you look at it, sir, the gas infrastructure, the pipelines we've laid, the amount available, all that is on the increase, sir. Thank you. Mani Shri Jawahar Sarkar. See, mic is working नहीं पहले से mic काम कर रहा पूछने से please. Mike, sir, I would like to ask the Honourable Minister how much the disturbances on the Red Sea route, the Houthi and other attacks on the Red Sea route, are affecting the West Indian market of gas and petroleum crude, since he has raised the issue of $19 per barrel. Thank both of them. Thank you. $0.06 I should have added per barrel as the lowest point during the economic lockdown. I'm talking about the period of 2020, I think March to 21, 22. Because the global situation as a result of the pandemic was in a situation of chaos, there was no consumption, so the price came down to $19. Insofar as the developments in the Red Sea area are concerned, sir, I have been asked this question outside this august house, and my answer has always been, yes, we have a certain degree of anxiety because these are non-state actors affecting supply lines, and should those supply lines be disrupted totally. Just now, there is some rerouting taking place on account of that uncertainty, and that rerouting results in higher freight costs, higher insurance costs. But as it is, I say with my fingers crossed that we are reasonably confident that given the goodwill around, these factors making for anxiety will be contained, and we do not have an all-out escalation. Now, if an all-out escalation of hostilities takes place and there is a total supply line, I don't want to name the areas, it's very clear, then of course there would be a cause for concern. But so far the international community, their geopolitical equations and the marketplace has adjusted. When I last looked at the price of oil, it had come down, I think yesterday when I inquired, to $77 a barrel. My own feeling is that if the uncertainty in the Red Sea area, particularly the attacks by the non-state actors, if these were not to recur
or not in that frequency, or most importantly, if they were not to escalate and exacerbate, I think this is a manageable situation. Thank you. Sri M. Thambidurai, Manya M. Thambidurai. Deputy Chairman, sir. Minister, in his reply, he said regarding this natural gas infrastructure, in that he replied, they are going to put operational natural gas pipeline has increased. Because there is apprehension in Tamil Nadu farmers, they are opposing this kind of putting gas lines in the agriculture land because there are a lot of agitation taking place. Whether the minister aware of that and come forward to solve the Tamil Nadu agriculture farmers must not affected put this kind of gas line through that land. Instead of that, there had been roads, national road, they can bring that. You have put your question. Thank you. Sir, I am grateful to the Honourable Member for having raised this issue. Of course, he wants to inquire whether I am familiar with it. So I am not only familiar with it, I spend a large part of my waking day to resolve these problems. I just give him one example. I wrote a letter to the Honourable Chief Minister on 2nd October 2021. And this is just one letter I've written. Here, Tamil Nadu Chief Minister. Since you are asked a question on Tamil Nadu, I refer to them. And I said that the Kochi, Kutanad, Mangalore pipeline, KKBMPL project, was conceptualized as part of the ambitious national gas grid. This pipeline was planned to evacuate the regasified LNG from Kochi LNG terminal to transport to various consumers in the states of Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka. GAIL has been entrusted to implement this. But you see, the fact that arises, the same pipeline, when it went through Kerala, 514 kilometers has been completed. It goes through Karnataka, 58 kilometers has been completed. And Tamil Nadu, 329 kilometers not completed. Now, whenever the state government is unable to implement a project in terms of the obligation it has, so we have been in constant touch with them. We received periodical assurances that they are attending to it. But as I said, sir, all the other states, Kerala done, Karnataka done, and Tamil Nadu, it's still under implementation, and we would... Please, thank you. Now, I'm coming to that. Farmers... Thank you. Thank you. Now, question number 17, Mani Sri Raghav Chadha. माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा के पटल पर रख दिया गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय राघव चड्ढा जी। सर, मेरा पहला सवाल भारत देश के एमएसएमई सेक्टर में जो सिकनेस है उससे संबंधित है। सवाल बड़ा सरल है। वित्तीय वर्ष 22-23 में लगभग 13,000 एमएसएमई बंद हुई, जो पिछले 4 वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है। हम ये अगर अनुमान लगाएं कि 50 लोग एक एमएसएमई में भर्ती होकर काम करते हैं, रोजगार लेते हैं, तो अगर 13,000 यूनिट्स बंद होती हैं तो लगभग 6.5 लाख लोगों की नौकरी चली जाती। और एक फैक्ट और देके मैं सवाल पूछ रहा हूं कि वित्तीय वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 में भारत देश के जितने एक्सपोर्ट्स होते थे उसका 50% हिस्सा लगभग एमएसएमई सेक्टर से आता था। आज वो 50% से घट के 44% हो गया, यानी कि एमएसएमई के एक्सपोर्ट्स भी गिरते जा रहे हैं। सवाल मेरा माननीय मंत्री जी से ये है कि जिस प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ तो छोड़िए, जिसमें गिरावट देखी जा रही है, उसके क्या कारण है और खास तौर पे उसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा? धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है कि एमएसएमई के अंदर 19, 20, 21 और 22-23 से 3-4 सालों में जीडीपी में गिरावट आई है, ये उसका कहना है। वैसा एक्सपोर्ट में भी सर, एक्सपोर्ट में 2 साल में कोरोना के कार्यकाल और जीडीपी भी कोरोना के कार्यकाल में 2% से गिरा, बात सही है, 2% से। मगर 21-22 में फिर 29.1% वापिस इंक्रीज हुआ
अभी 22-23 में तो अबाउट 30% हो ही गया होगा। तो कोरोना के कार्यकाल में गिरावट हुई मैं मानता हूँ, एक्सपोर्ट भी कम हुआ वो भी मैं मानता हूँ, मगर अभी एक्सपोर्ट भी इसमें 45.83% हो गया है, तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण कोरोना के कार्यकाल में देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने उस वक्त जो योजना अलग अलग दी, क्रेडिट गारंटी योजना जो उन्होंने चालू की, उसके अंदर एमएसएमई के ऊपर कम से कम 2,41,000 करोड़ जो एमएसएमई बंद हुई थी वापस चालू करने के लिए उनको पैसा दे दिया गया, लोन दे दिया गया। इससे अभी 45.83 हो गए है। अभी मैं मानता हूँ कि इसमें एक और भी है कि हमारा जीएसटी जो 19-20 में 5 लाख करोड़ था, 20-21 में कम हुआ 4.7 लाख करोड़ हुआ था, अभी 21-22 में 5.3 अभी बढ़ गए है। पहले इतना ही हो गया, अभी इससे भी 2% एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है। तो आपने कहा गिरावट हुई थी कोरोना के कारण, मगर अभी फिर एमएसएमई में अलग अलग योजना देकर वापिस जो उद्यमी बनते वो चालू हो गए और अच्छा उत्पादन दे रहे। उसका फिगर मैं जीएसटी के माध्यम से मैं कहा। सेकंड सप्लीमेंट्री ब्रीफली पहले मैं जरा एक सवाल सेकंड सप्लीमेंट्री आप सवाल मंत्री जी ने जो फैक्ट बोला वो गलत बोला है, तो मैं आप उसके लिए दूसरे रास्ते हमारे राघव चड्ढा जी आप सवाल पूछें। अच्छा मैं आगे चल मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आप सवाल पूछें। एनपीएज और लोन डिफॉल्ट्स की जहां तक बात है, इस एमएसएमई के सेक्टर में ये देखा गया है कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोन्स लिए गए, चाहे सरकार की किसी योजना के तहत लिए गए या बैंकों से लिए गए, वो लोन डिफॉल्ट हो गए सिंपली बिकॉज वो सेक्टर पूरी तरीके से गिरता जा रहा है पिछले 3-4 वित्तीय वर्षों में। खास तौर पे भारत सरकार एक स्कीम लाई थी जिसका नाम था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी ECLGS। इसमें सरकार की अपनी रिपोर्ट बताती है कि एक अधिकांश हिस्सा जो लोन के माध्यम से एमएसएमईज को दिया गया था वो एनपीए हो गया है, उस पे डिफॉल्ट हुआ। आपका सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो छोटा एंटरप्राइज होता है, जो गरीब लोगों को रोजगार देता है, उनकी बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और खास तौर पे इस एनपीए डिफॉल्ट से डील करने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं पहले कहा कि कोरोना के कार्यकाल में कई उद्यमी बंद हुए थे, कामगार भी चले गए थे। उस वक्त गिरावट जरूर थी जीडीपी में, अगर उसी तरह लोगों ने लोन भी रीपेमेंट न किया, एमपी बहुत सारे अकाउंट एमपीए हो गए, इसलिए इमरजेंसी क्रेडिट योजना 5 लाख करोड़ देश के पंतप्रधान जी ने इस डिपार्टमेंट के लिए दिए, उसमें से 2,41,000 करोड़ ये उद्यमी के लिए और जिन्होंने का एमपीए हुआ उनको भी वापस लोन देने के लिए उसका जो लिमिट था 1 करोड़ वो 5 करोड़ तक लेके गए और उनको पुनर्जीवित करने का काम सरकार ने किया। इसलिए उत्पादन फिर बढ़ा, पहले इतना ही उत्पादन बढ़ा, कुछ घाटा नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ वो सभी इंडस्ट्री फिर चालू हो गए हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री एस सेलंगवेथी, माननीय श्री एस सेलंगवेथी, एस सेलंगवेथी प्लीज। Honorable Chairman, sir, there is a survey has been conducted recently with input from 2,600 formal MSMEs from 5 states and Union Territory of Puducherry. One of the 2 surveyed MSME want an instant line of credit, but the non-availability of the short-term credit is the biggest hindrance for the MSMEs. So I would like to request our Honorable Minister to look into the demand and request of the MSMEs. Thank you. सर, सभापति महोदय, क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जो
उद्यमी बंद हुआ है उनके लिए लोन की भी व्यवस्था की गई, मदद भी की गई है। मैं समझता हूं जहां भी और भी उद्यमी को दिक्कत है उनको हेल्प करने के लिए पीएम जीप से लेकर अलग अलग 8-10 योजना है, उनके माध्यम से हम मदद करेंगे। मगर इंडस्ट्री देश का एक्सपोर्ट बढ़ाते, जीडीपी बढ़ाते, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए मैं समझता हूँ जो भी करना इंडस्ट्री के लिए उसके लिए हमारे पंतप्रधान तैयार है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि 5 लाख करोड़ इस डिपार्टमेंट के लिए इंडस्ट्री के लिए दिए है, उसमें हम उस जो हमारे सदस्य ने कहा उनको हम मदद करेंगे। माननीय शक्ति सिंह गोयल। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आपके जरिए मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि जो रिटर्न आंसर दिया है उसमें कहा है कि एमएसएमई ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए इन ऑल इंडिया जीडीपी, वो जो आंकड़े दिए हैं 2019-20 में 30.5% था, 20-21 में 27.3% था, 21-22 में 29.1। इट मीन्स अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हुआ तो कोरोना की सबसे ज्यादा इंपैक्ट 19-20 में होनी चाहिए, तब तो 30.5% था। कोरोना की इंपैक्ट उसके बाद नहीं हो सकती है 21 में 22 में, तो वो कम क्यों हुआ? और आप सिर्फ बड़े उद्योग की चिंता करेंगे तो लघु उद्योग का क्या होगा? धन्यवाद। प्लीज भाई साहब, लघु उद्योग की संख्या जो बंद हुई वो फिर सभी चालू हो गए, चिंता की बात नहीं, फिर सभी चाहिए। इसलिए उत्पादन में जो जीएसटी आपको पढ़ के बताया आज भी 5.3 लाख करोड़ है, कम नहीं हुआ है। जो पहले 19-20 में था 5 लाख करोड़ वो अभी बढ़ गए है। और इसमें मैं कहता हूँ 20-21 में 27.2 वो कोरोना का कार्यकाल है, कोरोना का कार्यकाल। और जब भी कामगार फैक्ट्री छोड़ के भागे थे, छोड़ के गए थे, तो अभी फैक्ट्रियां चालू होने के बाद अभी 21-22 में वो प्रमाण जीडीपी का बढ़ गया है। और इसलिए बढ़ने के कारण अभी पूर्ववत परिस्थिति निर्माण देश में हुई है एमएसएमई के बारे में। Labor welfare and employee wellness in the MSME sector. धन्यवाद। Sorry, repeat. प्लीज माननीय कार्तिकेय शर्मा जी सवाल पूछें। I would like to ask the Honorable Minister about the steps taken to ensure labor welfare and the employee wellness in the MSME sector. Thank you. स्वागत महोदय, काफी कदम उठाकर ये इंडस्ट्री को मैं फिर से चालू करने की कोशिश हुई। मैं सभी आपकी अनुमति हो तो मैं सभी पढ़ के बताता हूँ। आप ब्रीफली बता दें, ब्रीफली बताएं। निर्यात में एमएसएमई के हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम तहत व्यवसाय की सुगमता और संवर्धन और क्रेडिट की उपलब्धता में सुधार के विभिन्न पहल। माननीय मंत्री जी प्लीज माननीय मंत्री जी, आप जो सवाल है कि प्लीज आप सवाल ये है कि वर्कर्स के वेलनेस के लिए, वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है? क्या वर्कर्स के वेलनेस और वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है? माननीय सदस्यगण प्लीज। नहीं, आप सुनिए प्लीज सर प्लीज सर, ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ। वो उद्यमी चालू होने से वर्कर का प्रॉब्लम हल होगा, ऐसा नहीं विदाउट फैक्ट्री बंद रहेगी तो हल होगा ये प्रॉब्लम। वर्कर्स के वेलनेस वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है आप माननीय सदस्य को बुलाकर बता देंगे प्लीज। ठीक, प्लीज बैठ जाए आप। क्वेश्चन नंबर 19 श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार। श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार, कनक मेदला रविंद्र कुमार नॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट, अच्छा। माननीय मंत्री जी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सप्लीमेंट्री
First supplementary. As per Section 90 of the AP Reorganization Act 2014, It's question number 19. Let him ask, please. Do not interfere, Mr. Gokhale. Please take your seat. Take your seat. Please. Please, I will come to that. Yes, it's good. I'll come. Please. I'll come back. Please. sir, as per Section 90 AP Reorganization Act 2014, Polavaram irrigation project was declared as a national project. It will come back. Please. I'll come to 18. After this, I'll come to 18. Please. Please. Sir, from 2020 till today, no progress has taken place. And as per Polavaram project, how much time to complete the project it will take? Thank you. माननीय सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भारत सरकार ने बनाने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन मैं माननीय सदस्य और सदन के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसके निर्माण की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश की सरकार के पास में, निर्माण का काम करना, उस पर पहले खर्च करना, ये सारी जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश सरकार की है। भारत सरकार मात्र उसकी वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध कराती है। कार्य प्रगति पर है। और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो काम अब तक हुआ है, उस काम के अनुरूप अलग अलग जो 8 तरह के कंपोनेंट्स इसमें हैं, उन सब की जानकारी अब माननीय सदस्य को मैं व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा दूंगा। One second. Said, honorable members, we will take question number 18, not an occasion to be agitated. Sometimes human error. Sir, 1 second. Supplementary hogi, sir? Second, sir. Question number 19, second supplementary. Sir, I'll come to question number 18. Would you please take your seat? Would you please take your seat now? Ma'am, please, 1 second. It's a very good point that a question should not be skipped. Is there anyone in the house who has not heard once? We are here to make immediate rectifications. Question number 18 will be taken for sure. Let us first go through question number 19. Second supplementary, sir. Human error. 1 second. It was just slipped through the computer. It went ahead. And I corrected it that I will come to 18. Please. I already have spoken, madam. Please. Please, ma'am, these will not go on record. Ma'am, your observations will not go on record. I'm so sorry. These are intemperate observations. Sorry, absolutely. Please, absolutely, no. House. कौन सी सेकंड सप्लीमेंट्री हो गई? सेकंड सप्लीमेंट्री श्री कनक मेडला सर. Second supplementary. Sir. Sir, the Honorable Minister stated some progress. I'll come to that, ma'am. Nothing will go on record. Progress of the work is going on. But, sir, how much progress from 2022 till today taken place? How much is the amount invested for that purpose till today? Honorable Minister.
Madam, please, no cross talks. No, please. No, nothing will go on record. 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 Yes, Honorable Minister, please continue. Only what the Honorable Minister say will go on record. जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, Honorable Minister. और मैंने कुछ पहले सप्लीमेंट्री के प्रत्युत्तर में भी निवेदन किया था कि पहले खर्च करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एक्सपेंडिचर्स is the onus of state government, and after spending the money on different components of construction, the state government raises the bill with PPAP, Polavaram Project Authority, and then it comes to the government of India. But for the sake of answering the question which has been asked by honorable member, I wish to submit that in 2021, 2,234 crores have been released to PPA, and the same amount has been released to Government of Andhra Pradesh as reimbursement by PPA. In 2021-22, 751 Mr. crores Shakti and Singh Gohil, 47 crores take have your been seat. released. Dipender Huda, you are getting used to creating chaos unnecessarily. 1,671.323 crores have been released to PPA, and further PPA released the same amount to Government of Andhra Pradesh. Take your seat. In current financial What year word are you using? 23-24, so far No. I am surprised. 7 crore rupees have been You are released using these kind of words in this by house. Government of India to Polavaram These are Project expense. Authority, Expense. and a similar amount Sorry. has been transferred by Take your seat. Polavaram I'll come Project back. Authority. I'll come back to Government you of after Andhra this Pradesh. question is over. Please take your seat. I'll come back to you. I'll come back. Take your seat. Nothing will go on record. You are not her spokesperson. She herself is a very senior member. No, you don't have to support her. She's a very senior member. Sorry. Please continue. Honorable Minister. Doctor, 1 second. Take your seat. Take your. Would you take your seat? Should I name you? Mr. Dipender Huda, I will name you. Please. No. What do you mean by it? Sit down. Honorable members, please take your seat. Rao Sahab, on your seat. Take your seat. I have already indicated that after I am through with question number 19, I will take up this issue. When we will take up this issue, in a composed manner, try to find a way out. Jaya Bachchan ji is a very senior member. If she has a sentiment that is bound to be very serious with me, let me go through question number 19, then I'll come to question number 18 and the concerns that are being raised. Please. Dr. C.M. Ramesh. Sir, I have gone through the answer. This diaphragm wall was damaged in 2020. What are you? Now we are in 2024. Have you not understood me? I can't help you. Sorry. Please continue. This is very important for Andhra Pradesh. When it will be completed, when the diaphragm wall details will come. Only the diaphragm wall damage since last 4 years. The 4 years the project is stalled, sir. When it will be completed, when the diaphragm wall details, national agency, international agency, when they will give. Honorable Minister. जो माननीय सदस्य ने कहा है कि डायफ्राम वॉल 2020 के बाढ़ के समय में डैमेज हुई थी, लेकिन जब उस पर काम करना प्रारंभ किया था और ये विषय संज्ञान में आया, उसके बाद भारत सरकार के नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के जो है विशेषज्ञों ने जाकर के वहाँ इस विषय पर पूरा अध्ययन किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। 2 तरह के ऑल्टरनेटिव्स उसमें दिए गए थे कि एक जो एग्जिस्टिंग वॉल है उसी को रिपेयर किया जाए, और दूसरा जो था कि नई डायफ्राम वॉल बनाया जाए, क्योंकि डायफ्राम वॉल किसी भी बांध की स्पाइन या रीढ़ की हड्डी के जितनी इम्पॉर्टेंट होती है। इस विषय में कहीं भी कोई, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी लिख करके दिया है
कि जो कंसेशनर है, जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि अगर इसको रिपेयर किया जाए तो ये बांध के भविष्य को लेकर के उचित होगा या नहीं। हमने इंटरनेशनल एजेंसीज़ को हायर किया है और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की है। उसकी रिपोर्ट आने के साथ ही इस दिशा में, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है और इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी बांध के भविष्य को लेकर के एक जो है समस्या हो सकती है, इसलिए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और शीघ्र ही उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, is it true that the World Bank has come with a report that has indicated that by 2030 per capita water availability in India will shrink to half and push the country into water scarce category from the existing water stress category? Sir, in Marathwada in Maharashtra, this is a water scarce area, and what measures are proposed to augment the regulation and storage capacity of the Jaikwadi Dam to alleviate the water scarcity in the Marathwada region and bridge its divide with the North Maharashtra? Honorable Minister. महोदय, हालांकि मूल प्रश्न पोलावरम से संबंधित था, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी आज़ादी के समय में जितनी थी उससे घट करके निश्चित रूप से कम हुई और उसके अनेक कारण हैं। वर्ल्ड बैंक की जिस रिपोर्ट की माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उनके उसमें कितना तथ्य और उन्होंने किन विषयों के आधार पर या किस अध्ययन के आधार पर वो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, मैं उसके विषय में नहीं जाना चाहता विस्तार से, लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जो है 2030 तक या 2050 तक भी जिस तरह की चिंताजनक स्थिति की कल्पना माननीय सदस्य ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर की है, वैसी स्थिति नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दृष्टिकोण से कि देश की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए पानी की उपलब्धता को हम सुनिश्चित कर सकें और आने वाले समय में भारत जिस तरह से 2047 तक विकसित होने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, उसमें पानी की आपूर्ति कहीं बाधा न बने, इस दृष्टिकोण से पानी का विषय जो अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग विभागों में जो है निर्णय किया जाता था, उसको एक साथ मंत्रालय बनाया गया और पानी के परिप्रेक्ष्य में जितने तरह के जो है कंपोनेंट्स हैं उन सब पर भारत सरकार अलग अलग जगह पर अलग अलग दिशा में काम कर रही है। उसमें अनेक उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं। धरातल पर पानी रोकने के दृष्टिकोण से भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और भारत की सबसे ज़्यादा निर्भरता, विश्व में सबसे ज़्यादा निर्भरता जो है वो भूगर्भ के जल पर है। और मैं माननीय सदस्य के लिए और सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह के एफर्ट्स पिछले 10 साल में लिए गए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बार बार इस विषय पर चर्चा की गई, देश में इस तरह का वायुमंडल बना, पानी के रिचार्ज को लेकर के जो वायुमंडल बना, उसके चलते हुए मैं प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि जो भूगर्भ के जल का स्तर निरंतर देश में गिर रहा था, हमने हर साल का अध्ययन करना प्रारंभ किया है। पिछले 4 साल से पहले वो स्थिर हुआ था और अब अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है। जहां पानी की कमी हो रही थी हर साल, वहां अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में आखिरी रिपोर्ट आने तक, पिछले साल की रिपोर्ट में भी और इस वर्ष की रिपोर्ट में भी अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। हमारे सेफर ब्लॉक्स और ओसीएस कैटेगरी के जितने ब्लॉक्स थे उन सब में इंप्रूवमेंट हुआ है और 10% से ज़्यादा ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे ओसीएस कैटेगरी से बाहर निकल करके सेफर जोन्स में आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि यह संपूर्ण सफलता है, लेकिन जिस दिशा में हमने प्रयत्न किए हैं, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उसके परिणाम स्वरूप उपलब्धता, भूगर्भ के जल की उपलब्धता की दिशा में हम सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ पाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से सप्लाई साइड मैनेजमेंट के साथ साथ में डिमांड साइड मैनेजमेंट पर पहली बार अटल भूजल योजना के तहत काम करना प्रारंभ किया है, उसके परिणाम भी अब दिखाई देने लगे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये क्योंकि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकारों का विषय है, राज्य सरकारों को इस पर और अधिक गंभीरता और प्राथमिकता के साथ में काम करना पड़ेगा। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, उसके लिए सबसे बड़े उपभोगकर्ता कृषि क्षेत्र में हम पानी के उपभोग को किस तरह से कम कर सकते हैं, इस पर राज्य सरकारों को समन्वित दृष्टिकोण से प्रयास करना पड़ेगा। श्री GVL Narasimha Rao. Thank you, Chairman, sir. Sir, this question relates to Polavaram irrigation project in Andhra Pradesh. And a number of irrigation projects in Andhra Pradesh have been languishing, and what projects which state government was required to undertake have not been done for 60 years.
I'd like to congratulate and compliment the government and Honorable Prime Minister Modi ji for sanctioning huge amount of funds for Polavaram irrigation project as a central project, national project. I'd like to ask the Honorable Minister the amount of money that has been released so far under Polavaram irrigation project, and I have requested in the past to name it as Pradhan Mantri Modi Polavaram irrigation project, because this project, every rupee on this project is being spent by the central government. So I would like Honorable Minister to respond to my appeal to name it as Pradhan Mantri Polavaram irrigation project, and whether central government will take over the construction of the project, because the state government has not been moving fast Honorable enough Minister. in completion of the project. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि अब तक भारत सरकार ने इस पर कितना खर्च किया है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 2014-15 में जब इसे भारत सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता दी थी, तब से लेकर के अब तक 15,146 करोड़ रुपए की वित्तीय एलोकेशन भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में दे चुका है, जो आंध्र प्रदेश सरकार को भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। Honorable members, I'll now take question number 18, which could not be taken on account of certain technical situations. But I would like to reassert that we have in Harivansh ji a man of impeccable credentials, a man of great integrity. Human failure is something which is associated with all of us. If it has hurt someone, I take the responsibility, but I will indicate to all of you, think within, we could not have had a deputy chairperson with more sterling qualities, independence more than I have, and respect for all the members. It was slightly hurtful for me that some reflections came to be made about such a person. If there are some hard feelings, we need to forget about it. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde, question number 18. All right. I'll give floor to Jaya Bachchan ji. And I would request Jaya Bachchan ji. Thank you very much. Jaya ji, 1 second. You are a very senior member. Ji. Even otherwise in the country, whatever you say is looked up to and well regarded. So you will cheer us, all of us. अच्छा सर, मुझे बोलने तो दीजिए, आप ही बोलेगा। And I am sure a great actor like you must have taken money retakes also. सर, money retakes. सर, डेप्यूटी चेयरपर्सन के लिए बहुत रिगार्ड है और आज से नहीं, बरसों से उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उनके बारे में हमने कुछ नहीं कहा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहेंगे हम बैठ जाएंगे, डेप्यूटी चेयरमैन कहेंगे हम बैठ जाएंगे, मगर कोई और सदस्य हाथ हिला के अगर हमें बोले तो हम नहीं मानेंगे। दिस इज आवर राइट टू क्वेश्चन। यू टेल अस कि ये सवाल नहीं ले सकते, देयर आर प्रॉब्लम्स, वी विल टेक इट लेटर, वी अंडरस्टैंड, वी आर नॉट स्कूल चिल्ड्रन, बट treat us respectfully. Point made. Thank you. Honorable members, I think no one will disagree with the sentiment. The House is under the control of rules and the person presiding. And I am sure everyone will follow. This is a good manner. This side or that side. The members must not exchange inter-se. Everything has to be through the chair. Question number 18, Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. Not present. Honorable Minister. On the table of the House. Supplementary, Saket Gokhale. Thank you, sir. So my question is, in the interim budget 2024 that was presented by the Honorable Finance Minister, allocation for the UDAN scheme has been slashed by 60%, 60%. Of the 1,300 valid routes allotted under UDAN 5.0,
501 routes have been cancelled already. So my question is, sir, why has the budget for Udan been reduced by 60% from 1,244 crores to just 850 crores? And number two, what steps are being taken to revive the 501 cancelled routes which are allocated under Udan 5.0? Honorable Minister. Question on budget, but let me clarify. Where Udan scheme is concerned, 529 routes are already operational. No route has been cancelled. There is a system in place by which the routes are allocated. And I'll state the system is as follows. There is a valid bidding that is done. Airlines are called to bid for a particular route. If an airline bids for a particular route, that route is allocated to it. Based on this, an underserved or unserved airport is made up in terms of whatever facilities are required by the AAI so that the flights can take place from that particular airport. Now, if that airline walks away from that route, the bidding takes place again in the next round of bidding. So there is no route which has been allocated, no route which has been cancelled. It all depends on bidding and the aircraft. Sir, will you please... Not a good... Please, let the minister complete. What is this? Mr. Gokhale, 1 second. Is it according to rules? You don't hear the minister out? Please. You must maintain some decorum. Let the minister complete. If you still have an issue, rules provide for a mechanism. Please, Honorable Minister. And there is no pre-allotment of routes anywhere. I'd like to underline that aspect. The airlines, if they walk away from a particular route, after a particular period of time, that route is bid again. An airline has 2 years to start a particular route. If it doesn't start a route, it goes into the next bidding. And therefore, that route remains unutilized till the time the next bidding takes place. Vandana Chauhan, please. Vandana Chauhan. Sir. Will you first take your seat? First, 1 second. Will you first take your seat? First, no, I am saying take your seat. First you take your seat. Is it the way to conduct proceedings? Sit down first. Sit down first and listen to me. If a minister responds to a question and if an honorable member, for one reason or the other, is not satisfied, that could be on several grounds. One, not understanding the perception of the minister, or the minister not responding adequately. In both the situations, it is not the mechanism to jump on the chair. One second. Sit down. You still don't understand. I'm sure senior leaders of your party will persuade you to maintain decorum. Vandana Chauhan. Thank you, sir. Sir, every airport is supposed to have proper maintenance and service delivery for its commuters, sir. I would like to raise the question, particularly in the case of Pune Airport, which I've raised several times in this House. So the Pune Airport has been seeing deteriorating quality, and the rank has been slipping down lower and lower. Now it is 17th position in a survey conducted by the Airport Council International. So I would like to ask the Honourable Minister, what are the steps being taken for such slipping down ranking airports, and particularly for the Pune Airport, which is still to see the light Honourable of the day, Minister. actually. We are still using the Air Force Airport. Overall question does not pertain to maintenance of airports and all other things. Nevertheless, I noted this point, and I'll convey to the member as to what action has been taken. Shri Rajiv Shukla. जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र राज्य में शिरडी नामक बहुत जो है धार्मिक स्थल है, जहाँ बहुत लोग जाते हैं, शनि सिंगनापुर के लिए भी जाते हैं। वहाँ की अभी तक जो है एयर सुविधा है, पहले तो थी नहीं, अब कुछ एयरपोर्ट बनाया, बहुत कम फ्लाइट की सुविधा है, जबकि लाखों लोग उत्तर भारत से वहाँ जाते हैं। तो शिरडी के लिए वो क्या सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर करेंगे? चेयरमैन सर, शिरडी का एयरपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र सरकार के नीचे है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नीचे नहीं है। और जो भी फ्लाइट जितनी भी बनती हैं किसी भी एयरपोर्ट के लिए,
या किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो एयरलाइंस के ऊपर निर्भर करता है। एयरलाइंस कहां से कहां पर ले जाना चाहते हैं, अपने रूट को देखते हुए, अपने हवाई जहाज़ों को देखते हुए, अपने खर्चे को देखते हुए, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हम, जैसा कि मेंबर ने कहा है, उसके लिए अलग अलग एयरलाइंस को बोला जाएगा। अगर वो इसके अंदर और इजाफा करना चाहते हैं नंबर ऑफ फ्लाइट्स के अंदर, उनको बता दिया जाए। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। सो मच सर, मेरा सवाल पुणे से जुड़ा हुआ है और शिरडी को लेकर जुड़ा हुआ है। पुणे के ओल्ड एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल 5 महीने से तैयार है, पर उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, तो इसमें ये डिले क्यों हो रहा है? दूसरी बात, हमारी जब सरकार थी तब हमने एक नई बिल्डिंग प्रपोज की थी, उसको इन्होंने स्क्रैप कर दिया। क्योंकि ये महाराष्ट्र का ही सवाल है, इसलिए महाराष्ट्र तक ही सीमित रख रही हूँ सर। शिरडी का भी अभी कहा गया कि वहां योर सप्लीमेंट्री सर, ये पुणे और शिरडी का कहा गया राज्य सरकार के अंतर्गत है, तो राज्य सरकार की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? सिविल एविएशन उनसे सवाल नहीं पूछ सकता? योर सप्लीमेंट्री सर, supplementary is this. Why is a new airport terminal All right, not Honorable being Minister. inaugurated? Why is it waiting for an inauguration for 5 months? पुणे के इनॉग्रेशन के लिए 5 महीने का इंतजार नहीं हो रहा है, वहां पर काम चल रहा है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, श्री सुजीत कुमार। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। सप्लीमेंट्री 1, श्री सुजीत कुमार। सर, टेक फॉर ट्राइबल करके एक बहुत सुंदर इनिशिएटिव एमएसएमई मिनिस्ट्री ट्राइफेड के कोलैबोरेशन में शुरू किया था। सर, ये इनिशिएटिव जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका आईटी स्किल, उनका बिजनेस स्किल्स और सॉफ्ट स्किल बढ़ाने के लिए सर ये शुरू किया गया था। मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, ये इनिशिएटिव का प्रोग्रेस क्या हुआ है, कितने ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स इससे लाभ उठा चुके हैं और इसको आगे कितने सालों तक चलाएंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, विशेष रूप से इन्होंने जो बात की है उसके लिए एसटी के लिए, ये जितनी भी योजनाएं एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही हैं पूरे देश के लिए चलाई जा रही हैं, और विशेष रूप से पीएमईजीपी जो योजना है उस योजना के माध्यम से हम लोग जो छोटे छोटे लोग हैं उनकी मदद करते हैं। उस योजना के माध्यम से अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से हम लोग देखते हैं तो भारत में पूरे देश में जो हम लोगों ने सब्सिडी अगर गरीबों को दी है तो 2.4 हज़ार करोड़ रुपए दी है, और इसमें जो योजनाएं हैं वो करीब 65,000 योजनाएं हैं जिनमें हम लोगों ने मदद की है। और उसी तरीके से रोज़गार अगर दिया है तो 5,52,000 लोगों को रोज़गार दिया गया है। वो विशेष रूप से जो पीएमईजीपी योजना है सर, ये ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए इन दोनों में सब्सिडी का अलग अलग प्रावधान किया गया है। अगर शहरी कोई एरिया है और जनरल लोग हैं तो उसे 15% की सब्सिडी दी जाती है, और यदि वो ग्रामीण में है तो 25% की सब्सिडी दी जाती है। यदि कोई एससी एसटी है, यदि वो शहर में रहता है तो सर उसे 25% की सब्सिडी दी जाती है, और यदि वही ग्रामीण में रहता है तो उसे 35% की सब्सिडी दी जाती है। इस तरीके से इस योजना का क्रियान्वयन पूरे गांव में, पूरे देश में किया जा रहा है। अब इन्होंने विशेष रूप से जो पूछा है, आज हम उड़ीसा के बारे में जो हम लोग यहाँ सब्सिडी लेके आए हैं, करीब 69 करोड़ रुपए हम लोगों ने उड़ीसा में सब्सिडी दी है, और विशेष रूप से इस परियोजना में करीब 2,100 परियोजनाओं को हम लोगों ने क्रियान्वित किया है, और करीब 17,500 लोगों को इसमें रोजगार मिला है। सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल पूछा था सुजीत कुमार। सर, मैंने सवाल पूछा था टेक फॉर ट्राइबल्स जो स्कीम है उसके बारे में, पीएमईजी के बारे में नहीं पूछा था सर, लेकिन मैं उनसे बाद में आंसर ले लूँगा। सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है सर, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का एक रिपोर्ट आया था 2022 में। उस रिपोर्ट में सर दर्शाया गया है कि जो एमएसएमईस हैं उनका सर क्रेडिट गैप है 20 से 25 लाख करोड़ रुपया, और सर ये तो जनरल सर एमएसएमईस के लिए, ट्राइबल लेड एमएसएमईस या ट्राइबल लेड एंटरप्रेन्योर्स, इनका क्रेडिट गैप सर क्लोज टू 90% है। तो सर मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी सर अवेल करने के लिए क्या क्या स्कीम सर? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से ट्राइबल जो हमारे लोग हैं उनकी मदद के लिए
और पूरे देश में जो हमारी MSME की योजनाएं हैं वो पूरे सभी के लिए विशेष रूप से चलाई जा रही हैं। विशेष रूप से हम लोग देखें तो आज हम लोग TC बना रहे हैं, पूरे देश भर में टेक्निकल सेंटर बना रहे हैं। वो करीब 53 टेक्निकल सेंटर हैं, वो 20 नए बना रहे हैं, जिससे 125 करोड़ की लागत से पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग देखें एक्सटेंशन सेंटर बना रहे हैं, 100 करीब वो 10 करोड़ की लागत से बना रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने 6000 करोड़ का बजट रखा है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारी विश्वकर्मा योजना है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को लागू की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना लागू की है, उसके लिए भी गरीबों के लिए है। ये उन गरीबों के लिए है जो छोटे छोटे लोग हैं और 18 प्रकार के ट्रेड में जो घर बैठे काम करते हैं, उनके लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और उसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो करीब 88 लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आगे भी ये रजिस्ट्रेशन बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आज मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी हमारी सारी चीज़ें हैं, EDP योजना, स्फूर्ति योजना, SC ST हब, ये सब गरीबों के लिए योजनाएं हैं, उनके लिए ये काम कर रहा है। डॉक्टर शांतनु हुसैन। Sir, through you, my supplementary question on MSME to our respected minister is, though as per national record, West Bengal ranks second in MSME, where we are having nearly 90 lakhs of MSMEs and we have created nearly 136 lakhs of employment through that. My question is, instead of getting proper cooperation, these non-BJP ruled states, why they are being looked after with stepmotherly attitude, sir? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा। ये योजनाएं पूरे देश में चलाई जा रही हैं। जो भी योजनाएं हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, चाहे हमारी जो प्रधानमंत्री अभी विश्वकर्मा योजना हो, और जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजना का क्रियान्वयन बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। इन्होंने अपने बात की है, वेस्ट बंगाल की बात की है, विशेष रूप से वहाँ जितने भी हैं उन्हें सारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज की स्थिति में वेस्ट बंगाल में PMEGP के अंतर्गत जो लाभ इन्हें मिल रहा है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, चूँकि पश्चिम यस मिस्टर राणे। माननीय सभापति महोदय, ये प्रश्न जो है ओडिशा का है। ये डिटेल सब मांगा है ओडिशा का। MSME के बारे में अलग अलग स्कीम का इन्होंने डिटेल मांगा है। ये पश्चिम बंगाल का नहीं है, तो बंगाल के लिए वो अलग प्रश्न पूछे, हम डिटेल में इसके बारे में आंसर देंगे। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, given the initial challenges faced by MSMEs in setting up digital assets and ensuring cyber security, it is essential for them to enhance understanding and integration of cyber security measures. MSMEs, sir, are facing capital constraints, struggle with a shaky technology base, hindering growth and recognition. In addressing these issues, what measures does the ministry propose to make MSMEs more reliant on technology and overcome growth bottlenecks and add to the economy in full potential? Question hour over. Bills for introduction. On demands for grants 2023-24 pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs. Sir, I lay the statement. Honorable members, I have received one notice under Rule 267. The notice does not merit admittance. Matters raised with permission. Shri Samir Urang. माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को
सदन में आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं। गुमला जिला में आज तक रेल लाइन नहीं पहुंचा है। मैं बार बार सदन के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि लोहरदगा से लेकर के कोरबा, ये धर्मजयगढ़ से कोरबा का लाइन प्रारंभ हो गया है रेल लाइन, और धर्मजयगढ़ से लोहरदगा 291 किलोमीटर है। ये कई बार इसका सर्वे हो रहा है, लेकिन ये निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। गुमला जसपुर ये जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहाँ से हमारे जो है देश के सेवा करने के लिए कई ऐसे सैनिक वहाँ देश की सेवा कर रहे हैं, और एक बहुल जनजाति बहुल क्षेत्र है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो है सर्वे होने के बाद यथाशीघ्र यह रेल लाइन बने, जिससे कि गुमला से जसपुर और धर्मजयगढ़ से कोरबा, और इधर जो है जसपुर गुमला से रांची तक जा कर के वहाँ के जो सैनिकों के लिए रेल की सुविधा हो सकती है। वहाँ किसान हैं, किसानों को फल सब्जी के लिए आगे वो बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ वो माइनिंग एरिया भी है, और इन सारे सुविधाओं से वो आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी इसको यथाशीघ्र निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद माननीय समीर उरांव जी। ऑनरेबल श्री वाई को सब्जेक्ट नीड टू रिलीज नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड टू तमिलनाडु विदाउट डिले। Honorable Deputy Chairman, sir, the recent heavy rains and floods due to Cyclone Mochong, which devastated 5 districts of Tamil Nadu, namely Chennai, Tiruvallur, Kanjipuram, Chengalpattu, caused loss of life and damages to vast public and private property, followed by these unprecedented heavy rains and waterlogging and floods in 5 districts, Tirunelveli, Thoothukudi, Kanyakumari, Chengalpattu, Tiruvallur, resulted in destruction of public infrastructure and made lakhs of people homeless. I have requested the Honorable Prime Minister and Home Minister through my letter dated 19th December to send a central team to visit disaster-prone areas for release of financial assistance. Our Honorable Chief Minister, Thalapathy Stalin, also requested for release of Rs 37,000 crore for providing relief to the disaster-affected people and to improve the public infrastructure which was damaged. We also demanded that the recent disaster occurred to Tamil Nadu be declared as a national disaster and adequate relief fund may be released immediately. In this connection, one higher level delegation of MPs from Tamil Nadu also met the Honorable Home Minister at Delhi on 13th January 2024 for expeditious release of funds, in which I was also present. In that meeting, the Honorable Home Minister assured that all formalities will be completed and adequate funds will be released soon. However, nothing had happened so far. Despite the report was presented by the central team to the Home Ministry, this is a stepmotherly treatment meted out to the state of Tamil Nadu. I would therefore demand that the disaster relief amount as demanded by the Tamil Nadu government may be released immediately to the state, as people are still suffering from the disaster and lot of relief and reconstruction works are awaiting for the funds. Thank you, Aikoji. Dr. Fauzia Khan need to make dash camps mandatory for reducing hit and run cases in India. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. The amendment to Section 106 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Section 304A of the IPC, brings about significant changes in addressing road safety and traffic violations. Sir, Section 279, 304A,
338 of IPC apply in hit and run case incidents. In extreme cases, the police may book a hit and run case under section 302. 302 जो खून करने पर लगता है, और कोई ड्राइवर जो 302 सेक्शन में बुक हो गया उसको सजाए मौत हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है। सर, कुछ दिन पहले इन प्रोविजंस को लेकर इसके विरोध में बहुत भारी संख्या में ड्राइवर्स एसोसिएशन ने रस्तों पर आकर प्रोटेस्ट भी किया था। सर, किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में सबूत की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर सज़ा इतनी भारी हो तो सबूत की स्पष्टता भी आवश्यक होनी चाहिए। One key aspect that deserves attention in the wake of these stringent measures is the promotion of dash cams. Dash cams have emerged as a valuable tool that can provide concrete evidence in the event of a road accident. So most countries in the world have adopted this on a large scale. Making the use of dash cams mandatory for manufacturers aligns with the objective of collecting reliable evidence, ensuring transparency, and facilitating a fair legal process. So today, seat belt beeps, plastic bonnets, and so on have been made mandatory for manufacturers. Dash cams may be made mandatory in the same way. The significance of dash cams becomes more pronounced considering the prevalent issue of tampering with evidence and corruption within the authorities. In advocating for the widespread adoption of dash cams, it is crucial to highlight their role in not only protecting law-abiding citizens, but also acting as a deterrent against corrupt practices by law enforcement, sir. Sir, these devices serve as an impartial witness, recording events accurately and discouraging unethical behavior. As India grapples with the challenges posed by strict traffic regulations, the incorporation of dash cams emerges as a practical and effective solution to address concerns related to accidents, evidence tampering, and promote responsible driving practices, sir. Thank you. Thank you. Manya Shri Imran Pratapgarhi, concern over unconstitutional action taken by DDA to remove encroachment in Delhi. उपसभापति महोदय, मैं डीडीए द्वारा उजाड़ी जा रही दिल्ली की दास्तान और कुछ ऐतिहासिक इमारतों की चीखें लेकर आपके सामने खड़ा हूं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। इसी 26 जनवरी को भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को रूहानी दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारी सरकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लेकर गई थी। मेरी आंखों में एक तरफ तो यह तस्वीर है और दूसरी तरफ इसी सरकार के इशारे पर रात के अंधेरे में जमींदोज कर दी गई सैकड़ों साल पुरानी मामा भांजा, मंडी हाउस, काका नगर की छोटी छोटी मजारें हैं जो पूछ रही हैं कि हमें तोड़ा क्यों गया। उपसभापति महोदय, अबू धाबी जाकर शेख जायद मस्जिद में मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को मेहरौली की 700 साल पुरानी अखूंजी मस्जिद के टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती। डीडीए के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में मेहरौली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं। जो डीडीए 1957 में गठित हुआ वो अपनी पैदाइश से कई सौ साल पहले पुरानी मेहरौली मस्जिद को अतिक्रमण बताता है। क्या विकास प्राधिकरण संसद के बनाए हुए 1991 वर्शिप एक्ट को नहीं मानते? संसद से 4 कदम की दूरी पर मौजूद सुनहरी बाग मस्जिद, जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, जिसके सहन में कभी संविधान सभा के सदस्य इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी बैठा करते थे, वो आज एनडीएमसी को अतिक्रमण नजर आता है। जिस मस्जिद को लुटियन बसाने वाले अंग्रेजों ने नहीं ढहाया, उसे एनडीएमसी और डीडीए उजाड़ना चाहती है। आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दूर कहीं अशफाकुल्लाह खान, बीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान की रूहें क्या सोचती होंगी? जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां क्या सोचती होंगी जहां खड़े होकर कभी मौलाना आजाद ने लोगों को अपनेपन का यकीन दिलाया था। गैजेट, हेरिटेज, सैकड़ों साल का वजूद क्या हमारी संस्थाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते?
मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार देश को बताए कि वो 700 साल पुरानी इमारत को गैर कानूनी तरीके से जमींदोज करने वाले डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। वो देश को यह विश्वास दिलाए कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस नए भारत के निर्माण तक सैकड़ों कहानियों की गवाह सुनहरी बाग मस्जिद को सुरक्षित रखा जाएगा। विरासतों को सहेजा जाता है, उनसे नफरत नहीं की जाती, उन्हें उजाड़ा नहीं जाता। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी, सब्जेक्ट डिमांड टू विथड्रॉ द ड्राफ्ट डी रिजर्वेशन पॉलिसी प्रपोज्ड बाय यूजीसी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, as per the data submitted to the Lok Sabha in the month of August 2023, 4% of the professors and 6% of the assistant professors working in central universities belong to OBC. Sir, this number stands at 7% in the case of SCs and mere 1.5% in the case of STs. Sir, quite surprisingly, University Grants Commission, UGC, has issued recently draft guidelines de-reserving the vacancies meant for SCs, STs and OBCs, OBC candidates in higher educational institutions, and open up them for general category. This is very much unconstitutional and unwarranted, sir. The guidelines clearly state the ban on de-reservation of reserved vacancies in direct recruitment might be lifted in exceptional cases. I really don't understand what exceptionally exception cases and that are prevailing now for the UGC to take such a the unconstitutional steps, sir. Sir, the central, I draw your kind attention to the Central Educational Institutions Reservation Teachers Cadre Act 2019 clearly prohibits the de-reservation. Sir, the general procedure that is being followed and throughout India, in all, not only in respect of educational institutions, but even in respect of other government bodies, non-government bodies also, unfilled quota positions in universities, in the case of SC, STs and OBCs. And if they are not filled and unfilled and re-advertised and then special recruitment drives are carried out till the suitable candidates are identified, and until the suitable candidates are identified and these vacancies are filled, this procedure will go on, and there is no occasion and there is no reason why this should be de-reserved, sir. Sir, my sincere appeal to the government to prevent UGC from implementing such draft guidelines that erode the constitutional rights and protections which have been conferred on SCs, STs and OBCs for in the case of reservation, sir. I urge the government to ensure that the vacant positions reserved for these OBCs, SCs and STs are expeditiously filled and concerted effort should be made. Thank you very much, sir. Thank you, Mani Vijay Sai Reddy ji. Mani Shri Ajay Pratap Singh, demand to include Kol tribe in particularly vulnerable tribal groups, PBTG. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान कोल जनजाति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह सर्वविदित तथ्य है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय आबादी निवास करती है। मध्य प्रदेश की आबादी का लगभग 21% आबादी जनजाति भाइयों की है। इन जनजाति भाइयों के बीच में लगभग 7.68% आबादी कोल जनजाति की है। मध्य प्रदेश की यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका उद्गम स्थल कहा जाता है रीवा जिले के फरेंदा गांव या कुराली गांव में है। ये जो कोल जनजाति है, इसके शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन किया था
उस समिति ने सतना जिले के 5 गांवों का सैंपल के तौर पर चयन करके उनका जो अध्ययन किया है उसके निष्कर्ष से मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। उसके निष्कर्ष के अनुसार कोल जनजाति के मध्य जो शिक्षा का प्रतिशत है सतना जिले में वो लगभग 32% है। सतना जिले की आबादी लगभग 22 लाख है। 22 लाख में से कोल जनजाति 2,68,000 हैं। 2,68,000 के बीच में मात्र चंद सैकड़ा लोग ही स्नातक हैं, कुछ लोग ही 12वीं की कक्षा पास किए हुए हैं। कोल जनजाति के लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। ये सामान्यतः मजदूरी करते हैं अथवा खेतीहर मजदूर हैं, बड़े शहरों में रिक्शा चलाते हैं। इनके पास आवास के लिए भी कोई अपनी ज़मीन नहीं है। ये अन्य जाति के किसानों की ज़मीन पर बसे हुए हैं अथवा सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं। इनका ये जो मुद्दे हैं, ये जो समस्याएं इस कोल जनजाति की, इसको हल करने के लिए मेरा सरकार से आग्रह है कि जो अभी प्रधानमंत्री जनमन योजना लागू की गई है पीवीजीटी ट्राइब के लिए, उसके तहत या तो कोल जनजाति को पीवीजीटी ट्राइब के अंतर्गत शामिल किया जाए अथवा प्रधानमंत्री जनमन योजना का विस्तार कोल जनजाति तक किया जाए, जिससे कि उनका जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है वो दूर हो सके और विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके और उनका भी उत्थान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अजय प्रताप जी। माननीय श्री इरण कडाडी, नीड फॉर अमेंडमेंट इन एमपी लैट्स गाइडलाइंस। माननीय श्री इरण कडाडी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री मुजीबुल्लाह खान, डिमांड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स टू ओडिशा। उपसभापति महोदय, आज आप बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आभारी हूं। सर, उड़ीसा में किसानों के लिए फर्टिलाइजर का बहुत कमी है। इसी के कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी कई बार कृषि मंत्री जी को चिट्ठी लिख चुके हैं, बोल चुके हैं और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि फर्टिलाइजर उड़ीसा में जो कमी हो रहा है उसको कैसा फुलफिल किया जाए। नेशनल लेवल का अगर देखा जाए सर, तो पर हेक्टर 137 मतलब 1 क्विंटल 37 kg पर हेक्टर खर्चा होता है या फिर केंद्र सरकार देती है, लेकिन उड़ीसा में 66.17 माने 66 किलो ही फर्टिलाइजर दिया जाता है। उसका मतलब काफ़ी कम है, 50% करीब कम दिया जाता है। इसीलिए हमारा डिमांड है सर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में उड़ीसा में 76% लोग इन्वॉल्वमेंट है। 87,46,000 हेक्टर में फसलें होती है सर, उसमें 18,79,000 हेक्टर इरिगेटेड लैंड है। इसके बावजूद, इतना डिमांड करने के बावजूद पता नहीं क्यों हमारे फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो रहा है। केंद्र सरकार क्यों नहीं सुन रही है मुझे पता नहीं। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे उड़ीसा में एग्रीकल्चर फार्मर्स बहुत अच्छा फसल कर रहे हैं। इसी के कारण जो कृषि कर्मण अवार्ड जो दिया जाता है केंद्र सरकार की ओर से, वो उड़ीसा सरकार को 5 बार से ज्यादा दिया जा चुका है। उसका मतलब बहुत ही अच्छा फसल उड़ीसा के किसान लोग कर रहे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि पहले दिन ऐसा था, कुछ साल पहले ऐसा था कि लोग खाने को अनाज नहीं पाते थे। छोटे छोटे बच्चों को पेट में अनाज देने के लिए उनके परिवार का जो पिता होता था, जो भी होता था, वो चोरी करके ला के अपने बच्चों को अनाज देता था सर। इसीलिए खेत से अनाज चोरी हो जाएगा, इसके कारण बहुत से किसान रात को खेत में जाके सोते थे, खेत में जाके जगते थे सर। लेकिन आज स्थिति ऐसा है, कोई खेत में जगता नहीं है, कोई खेत में सोता नहीं है, क्योंकि सबके घर में अनाज है सर। उसका मेन कारण है, उसका मुख्य कारण है कि उड़ीसा का सरकार, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो किसानों के लिए जो योजना किए हैं वो उनको लाभ दे रहा है और बहुत सुविधा से किसान अपने परिवार को पोषण कर सक रहे हैं सर। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है कालिया योजना, जिसके तहत किसानों को 5,000 रुपया हर सालाना दिया जाता है और 50,000 रुपया तक सर उनको बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाता है, जिसके कारण किसान आज उड़ीसा में खुशहाली है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं
कि जो ये फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो रहा है, कैसा इसको फुलफिल किया जाए, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा के किसानों को। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी कंसर्न ओवर राइजिंग केसेज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड इन द कंट्री। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, नर्मदे हर। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज हर भारतीय ऐप, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल ऑनलाइन साधनों के माध्यम से अपने लेन देन की दैनिक क्रिया को बिना समय गंवाए आसानी से पूरा कर रहा है और यह डिजिटल युग का कमाल है। कोरोना महामारी के काल को माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व ने आपदा को अवसर में बदल कर रख दिया है, जिसका परिणाम अब सबके सामने है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन हमारे देश में हो रहा है, यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। माननीय उपसभापति महोदय, जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है, उसी के साथ साथ बहुत बड़ी चुनौतियां भी आती जा रही है। इसी क्रम में इस डिजिटल युग में डिजिटल लेन देन ऑनलाइन के माध्यम से कुछ लोग फ्रॉड या ठगी या धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारी सरकार इस प्रकार का फ्रॉड करने वाले लोगों के लिए कई प्रकार के कानून लेकर आई है। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन के माध्यम से फ्रॉड या ठगी करने वाले मामलों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 13,500 ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले निजी बैंकिंग क्षेत्र में हुए हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत को पिछले 7 सालों में हर रोज औसतन करीब लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ बैंक फ्रॉड या स्कैम के जरिए हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार एवं निजी एवं सरकारी बैंक के अधिकारियों से एक सवाल भी है। यदि हमारे देश के सभी बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं, आधार कार्ड पहले से ही तकनीकी रूप से सत्यापित हो चुके हैं, तो यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड या ठगी होती है तो हमारे सिस्टम में ऐसी क्या खामी है जो हम फ्रॉड करने वाले लोगों के खातों को ट्रेस नहीं कर पा रहे या पकड़ नहीं पा रहे हैं? यदि इस प्रकार की कोई खामी है तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। ऐसे असंख्य केस हैं जो लिखित में नहीं आते हैं। मैं भी दूर दराज आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। यह पीड़ा मेरे क्षेत्र के लोगों की भी है। एक कॉल या एक मैसेज में आए लिंक को खोलने मात्र से उस गरीब की मेहनत शून्य हो जाती है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निजी क्षेत्र के बैंक का अधिकारियों से विशेष आग्रह है कि वो अपने वित्तीय लेन देन के सिस्टम को इतना मजबूत बनाएं कि किसी गरीब के लिए यह बैंकिंग धोखाधड़ी श्री संजीव अरोरा। Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to take up this important issue. This is mainly regarding state of Punjab. I would like to draw the attention of the government through you to a significant issue concerning the wage rate notified under Manrega for the state of Punjab. The rate finalized for the state of Punjab is 303 rupees per day compared to higher rates in neighboring states, especially Haryana, which is 357. The minimum wage which Punjab government has done is 413 rupees. So my request is not only Punjab, in whole of nation, Manrega should match the minimum wage finalized by the state if it is higher. I mean, otherwise people do not want to work for Manrega schemes, and two things happen. Unemployment is also there, and then these schemes are not implemented.
even the total fund allocation on this account to the state of Punjab is going down as per official data from last years. In light of these disparities, I humbly request government through you to intervene to re-evaluate the current wage rate for Punjab under Manrega. It is imperative that the wage rate is increased to bring it to par with either the neighboring state or the minimum wage as set by the Punjab state government. Thank you. Thank you. श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, मैं भारत सरकार के उपासना स्थल कानून 1991 के मनमाने और असंवैधानिक प्रावधानों की ओर आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। माननीय, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। महोदय, इस कानून में प्राविधान है कि श्री राम जन्म मुकदमे के अतिरिक्त अदालतों में लंबित ऐसे सभी मुकदमे समाप्त माने जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। महोदय, उपासना स्थल कानून 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। यह कानून एक मनमाना और तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, सिख, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धार्मिक अधिकारों को कम करता है। माननीय, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे, वे पूजा स्थलों की महत्ता को नहीं समझ सके और उन्होंने राजनीतिक फ़ायदों के लिए अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदगी होने की प्रवृत्ति स्थापित की। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने अतीत को भूलकर एवं मिटाकर और अपनी जड़ों को काटकर प्रगति नहीं कर सकता। महोदय, इस कानून का स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर ज्ञानवापी और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया, उसे विगत सरकार द्वारा कानूनी रूप से सही ठहरा दिया गया है। माननीय, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। महोदय, यह स्थापित तथ्य है कि समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए 2 कानून नहीं हो सकते। दूसरे, कोई सरकार किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं बंद कर सकती। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूँ। धन्यवाद। श्री A.D. Singh। Thank you, Deputy Chairman, sir. Need for India's effective engagement in the Arctic region. India fulfilled a long-standing need and signaled its rising interest and stakes in the Arctic with the release of the Arctic policy on 17th March 2022. The study of the Arctic is critical to Indian scientists as it influences our monsoon, which directly imparts agriculture sector on which almost 60% India's population is dependent. The rising sea levels due to the Arctic ice melt also threatens India's 1,300 island territories and the welfare of 1.4 billion Indians. The Arctic meltdown also helps India's scientists better understand the glacial meltdown in Himalayas, the largest source of fresh water outside the poles and home to almost all of India's perennial rivers. It is for this reason that India is the only developing country apart from China to have a permanent research station in the Arctic since 2008 and has undertaken 13 scientific expeditions to the region. The Arctic therefore presents India with a complex set of opportunities as well as challenges to secure its increasing national interest. Firstly, India should seek a more inclusive and equitable Arctic Council with a greater say for the observer states in the decision-making process and more freedom in pursuance of the research objectives in the Arctic region.
Secondly, India should also fine-tune its own internal mechanism to impart a greater impetus to its Arctic endeavors with a more singular, coordinated and cohesive approach by appointing an Arctic coordinator. I urge the government to coordinate its efforts in playing a pivotal role in the Arctic region. Thank you. Honorable members, welcome to the parliamentary delegation from Republic of Suriname. Honorable members, I have to make an announcement on my own and your behalf. I have great pleasure in welcoming Sri Marinus Bey, Chairman of the National Assembly of the Republic of Suriname, and the accompanying members of the parliamentary delegation of Suriname who are on a visit to India as our honored guests. The parliamentary delegation from Suriname arrived in India on Sunday, 4th February 2024, and now are seated in the special box. Besides Delhi, they will visit Agra before their final departure from India. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the members of Parliament of Suriname, the government and friendly people of Suriname. संतोष कुमार पी। श्री संतोष कुमार पी। Thank you, Chairman, sir. Sir, there is an urgent, a critical need to increase the minimum wages of our workers in the country. Minimum wage is a concept which is universally accepted for combating poverty and stabilizing the economy. But unfortunately, in our country, the national minimum wage is shockingly low. That is just 178 rupees for 8 hours. So the trade unions, central trade unions and the Samyukta Kisan Sabha, Samyukta Kisan Morcha are demanding an increase in this, and at least 26,000 rupees must be provided for the workers in our country. As we all know, 90% of the workforce actually are in the informal sector. They don't have any social security, no security for their jobs, so the working conditions are also very miserable. In fact, there is no job contract as such. And in states also, between the states also, there is huge disparity. For example, in Kerala it is 837 for 8 hours, whereas in Gujarat it is 296 and in Tripura it is 250. So there is huge disparity amongst the states as well. So we have to enhance the minimum wages. Anup Satyavarthi Committee recommended in the year 2019 that at least 375 rupees must be the minimum wage. That is not accepted. And this was revised last in 2017. So I urge the government to increase the minimum wages of our workers who are actually the backbone of our economy. There is a system in government sector and corporate sector to provide DA and to increase salary. But these people are left without any social security or any such system. Then their bargaining capacity is also very low. So once again, I take this opportunity to request the government through you to take necessary steps to enhance the minimum wage of our poor workers. Thank you, sir. माननीय सदस्य अशोक कुमार मित्तल जी। धन्यवाद। आज मैं इस सदन के सामने दुनिया भर के 3 करोड़ सिख व अन्य
करोड़ों अन्य श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़े एक मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भारत सरकार टूरिज्म प्रमोशन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है, जिसमें एक योजना है स्वदेश दर्शन, जिसमें 5200 करोड़ की कीमत से 76 प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं। इस योजना में पूरे देश में प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर से संबंधित धार्मिक स्थलों को आइडेंटिफाई करके सर्किट के माध्यम से अलग अलग राज्यों में विकसित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही गुवाहाटी में शक्तिपीठ कामाख्या देवी जी के मंदिर की डेवलपमेंट के लिए भी 500 करोड़ रुपए का लागत से बनने वाला शिलान्यास रखा, जिसके लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है। मैं पंजाब से आता हूं, जो श्री गुरु नानक देव जी, श्री गोविंद सिंह जी और हमारे अन्य सिख गुरुओं की पवित्र धरती है। इन सभी गुरुओं ने दुनिया को मानवता, धर्मनिरपेक्षता और एक ओंकार का पाठ पढ़ाया है। हमारा महान श्री गुरु ग्रंथ साहब लोगों को निस्वार्थ सेवा करना सिखाता है, समाज से जुड़ना सिखाता है और उन सबको बराबर का सम्मान देना सिखाता है। सिख धर्म के 5 तख्त हैं, श्री अकाल साहब अमृतसर, श्री केसगढ़ साहब अनंतपुर साहब, श्री दमदबा साहब तलवंडी साबो, श्री पटना साहब पटना और श्री हजूर साहब महाराष्ट्र के नंदेड़ में स्थित है। इसके अलावा पूरे देश में सिख धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जैसे कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब उत्तराखंड, गुरुद्वारा श्री पोंटा साहब और गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहब हिमाचल प्रदेश, गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब पंजाब। इन सभी धार्मिक स्थलों की आस्था और मान्यता को देखते हुए पूरे विश्व भर से हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने सिख सर्किट के लिए एक ट्रेन भी शुरू कर दी है। अब मेरी मांग है कि स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से सिख सर्किट भी शुरू किया जाए, जिसमें हर राज्य में सिख धार्मिक स्थलों का विकास करके भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं का निर्माण हो, ताकि इन सभी धार्मिक स्थलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए। इन सभी स्थलों को आपस में व मेट्रो सिटी से रेल, रोड, एयर के माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि सभी श्रद्धालुओं को जो पूरे देश से, दुनिया से आते हैं, इन धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का लाभ मिल सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त, अब नोट पर नहीं आएगा। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद नदीमुल हक जी। Thank you, Madam. Need to release funds under NFSA owed to Bengal. The Union Government has withheld the release of rupees 7,000 crore to our state of West Bengal to procure paddy under the National Food Security Act. The state government has successfully acquired 8.52 lakh tons of paddy for the central pool this fiscal year. The state aims to achieve 80% of its annual procurement target during the ongoing Kharif season, which extends until the end of February. Timely release of funds is crucial, otherwise the entire procurement process may be affected. The halt in funds to Bengal stems from the need for NFSA logos and the Prime Minister's pictures to be put up across all ration shops in the state. Madam, it is ridiculous that the Union Government is willing to jeopardize an entire state's food security over a delay in plastering the Prime Minister's image, which is a time-taking task. This is the Union's rationale to withhold the funds. So Madam, let me read out a quote from Prime Minister Modi from 2018, and I quote, "Federalism is no longer the fault line of center-state relations, but the definition of a new partnership of Team India," unquote. However, since the current government has come into power, there has been a systematic deprivation of states, pushing people into distress in regions where they are incapable of winning elections democratically. Madam, the Union Government has blatantly carried out anti-federal policies and engaged in fiscal federal terrorism
denying Bengal funds worth rupees 1 lakh crores under several schemes. Despite pleas from a chief minister, party leaders and beneficiaries, the union has chosen to remain indifferent. This goes against the very spirit of the constitution. This goes against the people of Bengal. I challenge you, fight us democratically, fight us in elections, but do not make crores of people suffer for your political vendettas. I urge this government to immediately reimburse rupees 7,000 crore for procuring paddy under the National Food Security Act. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री जवाहर सरकार जी, अनुपस्थित। श्री राकेश सिन्हा जी है? Yes. Huh? Madam, we had requested the Government of India to change the name of the state of West Bengal to Bangla. This has been pending from 2016. And the West Bengal Legislative Assembly has taken a unanimous resolution that if, say, the name of Odisha can be changed to Odisha, आप सब्जेक्ट पे बोलिए, आपका सब्जेक्ट ये नहीं है। डिमांड फॉर क्लासिकल इंग्रेडिएंट स्टेटस फॉर simultaneously we have been agitating for the inclusion of Bangla as a classical language. We have taken a resolution on this score and we have submitted a 4-volume research paper to the Government of India on this subject. We ask for consideration of the details submitted thereon to establish the antiquity of the language of Bangla in syntax, in grammar, and largely in alphabet from the 4th century BC. It is our humble submission that our case as to include Bangla as a classical language be considered positively. माननीय श्री एस सिल्वागन वेथी, श्री बिजलाल जी, स्टेट ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। उत्तर प्रदेश में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और वहाँ पर शुरुआत में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन के बाद फुटफॉल 5 लाख पर डे था। एवरेज वहाँ पर फुटफॉल हो रहा है 3 लाख। और ये जो फुटफॉल है न केवल अयोध्या में, काशी में और मथुरा में, ये इतना फुटफॉल है कि इससे पर्यटन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। और उत्तर प्रदेश जो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें $1 ट्रिलियन योगदान उत्तर प्रदेश का होगा और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा धार्मिक पर्यटन का। अयोध्या में के विकसित होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहाँ का मैं भी रहने वाला हूँ, वहाँ के लोग विकसित होंगे। काशी में काफ़ी फुटफॉल हो रहा है। जब से वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का बनाया, जिस तरह से उसको ब्यूटीफाई किया है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है हमारे पर्यटन उद्योग में। उप सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में एक है बुद्धिस्ट सर्किट। बुद्धिस्ट सर्किट के जो 3 मुख्य स्थान हैं, 4 स्थान कहिए, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और हमारा जिला सिद्धार्थनगर है, जहाँ पर है कपिलवस्तु जन्म स्थान। कपिलवस्तु 1972 में खुदाई हुई, उसके पहले भी अंग्रेज भी वहाँ खुदाई करा चुके थे और वहाँ स्तूपा मिला। वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध महाराज के पिता सुशोधन महाराज जी का वो महल मिला और ये केमिकल एनालिसिस से ये प्रूव हो चुका है कि जन्मस्थल है। वहाँ उनकी अस्थि भी मिली थी जो दिल्ली में रखी हुई है। तो हमारा अनुरोध ये है कि भारत सरकार को ये जो बुद्धिस्ट सर्किट है, इसके विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ
कि कुशीनगर में उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है और ये जो जगहें हैं बुद्धिस्ट सर्किट भी है वो अयोध्या और काशी यहाँ के आसपास ये बुद्धिस्ट सर्किट हैं। और ख़ासकर मैं कपिलवस्तु के बारे में कहूँगा कि उसको हम लोग उतना कैश नहीं कर पाए। अभी वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, होटल्स नहीं है, रुकने के अच्छे स्थान नहीं है और केवल वहाँ पर जो रास्ता है केवल गोरखपुर से और वहाँ तक ट्रेन की उसमें, बस्ती से वहाँ तक बड़ी अच्छी सड़क बन चुकी है। तो मेरा अनुरोध ये है भारत सरकार के कि जो बुद्धिस्ट सर्किट है उसको सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो बुद्धिस्ट। माननीय सदस्य संगीता यादव जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे भारत में किशोर लड़कियों और महिलाओं के मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी राइट टू हाइजीन पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करती हूँ। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है माननीय सभापति जी जो देश की 50% आबादी से जुड़ा हुआ मामला है और 2017 से लेकर 22 तक जब मैं MLA थी तो मैं लगातार बड़े स्कूलों, जितने भी हमारी बच्चियां हैं जो 11 साल से ज़्यादा थी, उन सभी स्कूलों में और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं थी उनमें मैंने फ्री नैपकिन हमें हमेशा बांटने का काम किया 5 साल और जागरूकता अभियान भी चलाया। इसमें माननीय सभापति जी, गांव के हमारे प्रधान, पूर्व प्रधान, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका सबका सहयोग मिला। पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बिना, नहीं तो ये बंदिशों में ही हमेशा रहता था। और माननीय सभापति जी, हजारों महिलाओं और बच्चियों को हम लोगों ने गर्भाशय से जुड़े हुए अनेक बीमारियों से बचाया। तो मैं इसमें 0 आवर के माध्यम से मैं आपसे कुछ अपील करना चाहती हूँ। माननीय सभापति जी, माननीय मोदी जी ने भी लाल किले से इस मुद्दे पे चर्चा किया है और जब से पैडमैन मूवी आई तब से ये चर्चा का विषय और ज़्यादा विस्तृत तौर पे हुआ। लेकिन आज भी 5वें राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार, स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार केवल 36% महिलाएं ही सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती हैं। बाकी आज भी अज्ञानतावश अस्वच्छ सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो माननीय सभापति जी, ये इससे बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियां बच्चियों में, महिलाओं में फैल रही हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से इतना ही अपील करूंगी कि सरकार इसमें अच्छा काम कर रही है, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको मिशन मोड में करने की आवश्यकता है। एक तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगी कि इसको मिशन मोड में ले आया जाए, क्योंकि ये राइट टू हाइजीन देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी हमारी समस्या बना हुआ है। और यूट्रस कैंसर एक ऐसा कैंसर है माननीय सभापति जी जो ज़्यादातर 4th स्टेज पे ही मालूम पड़ता है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। और भी बांझपन की समस्या हुआ, संक्रमण की समस्या है, सर्वाइकल कैंसर है जो अभी बजट में भी हमारे माननीय मोदी जी ने रखा है, उसमें हमने चर्चा की है। लेकिन ये अगर इस पर हमने काम किया तो हमें ये अपनी 50% आबादी को बहुत सी बीमारियों से बचा पाएंगे। और 2 अपील और कर लूँगी माननीय सभापति जी आपके माध्यम से।